Can you make me host? Who is host now? Okay. मैम आपको होस्ट हो, शायद आप शेयर कर सकते हैं. Yes. Okay. Okay. Sure. Are you able to see my slides? Yes, ma'am. Okay. So once again, good afternoon, Manalal. Thank you for my brief introduction. Very nice introduction. So we are over here for discussing very interesting topic. You see, which has not been yet discussed anywhere. About some mood swings, right? We experience mood swings at different ages, right? As a human being, we have to face lot of challenges in our life, lot of difficulties in our life, lot of many happy events too, and many times we see that as the event goes on changing, our moods also goes on changing. It is there something behind our changes in mood that is being caused in our human body, and it is nothing but as a response to the say the hormones that are being secreted in our body. And the hormones we secretes in our body, they are very much responsible for the mood swings, for our emotions handling, and for our nature too, right? So it is very necessary that we have to look into this aspect of our body mechanism, which generally has been neglected. And hence I have kept my today's topic for discussions is I have parted my discussion in two parts. First is biochemical effects of stress on human body. Then I will speak up on how to manage stress very easily, right? So basically, we are going to discuss over here about what are the happy hormones, what are the stress hormones, what are the effects of hormones, what is the mechanism to handle the stress, what is the best technique to handle the stress, that we are going to discuss in both of these parts. So I think I should start my discussion over here. So we will start just by discussing about the definition of stress. All of you are able to see the screen, I think so, right? Now, as it is given over here, stress is defined as the body's response to the physical, mental, or emotional pressure. Right? It is the pressure which is exerted from outside. It is not a body pressure, right? Body में कुछ ऐसा mechanism नहीं होता है जो प्रेशराइज रहता है हमेशा. हमारा जो बॉडी है वो हमेशा खिला हुआ यानी हल्का फुल्का और विदाउट प्रेशरलेस रहना पसंद करता है, और उसका वो नेचर भी है. इट्स इमेंस नेचर इज टू keep the body, the human body is always in the relaxed mood. That is जो natural state जो है body का वो relaxed state ही है, लेकिन हम exert कर लेते हैं pressure, और that is causing the stress on us. So जो physical, mental, emotional pressure होता है उसी को हम stress कहते हैं, और ये body का response जो होता है उसको हम stress कहते हैं, right? अब ये जो response होता है ये इसके कारण due to as a response of the stress, numerous chemical changes in the body occurs that can rise the blood pressure or the heart rate or blood sugar levels, or it may lead to feelings of frustration, anxiety, anger, or depression too, and many body disorders, right? Now in brief, we can define the stress is always the response of the body to the external affairs which it is facing coming in front of it. So this picture shows that we are just carrying on the burdens on our body, neck, shoulder, right? And we are getting dumping down by the stress. Some psychological facts which are causing threatening situations in India. This has to be kept in mind that nowadays it has been found out that according to the recent studies carried out by Rehabilitation Council of India, and in the coordination with Times of India, Bombay Municipal Corporation, they have revealed that
Today, around 60 crore people in India needs mental health assistance and the treatment. They are out of treatment. So much of the people are out of treatment. 60 crore people are out of mental treatment. Only 6 to 7 lakhs. Why such situation has arose? Because only 6 to 7 lakh, the counselors are available in India. It means that India needs around 47 lakh counselors, mental counselors in 1 year. I am, by the way, through my lecture, I am keeping in front of you this alarming situation, and I am opening one avenue for also for you to work as the mental health counselors too. Then the National Laboratory of Medicine, National Center of Biotechnology Information, a Department of National Center for Biotechnical Information in National Laboratory of Medicine, it says that this treatment gap for mental disorders ranges between 70 to 90% for different disorders. So this is very alarming and threatening situation that has been arose in India. Now, during the some panic situations that have been arose during 2020, 21, 22 in all over the world, during such panic situations of COVID, amidst frequent hand wash, we have risen above the chaos of unmanageable COVID-19, isn't it? How? Just by easily reminding ourselves that along with some health precautions, there also exists some resilience. There also exists some immunity and hope, which can be just as contagious as that of the COVID-19. Now, ये इम्यूनिटी का ये वर्ड था है ना, जो इतना बहुत आसानी से लेने लगे लोग, जो कोविड में इसके पहले इतना इम्यूनिटी का ये वर्ड यूज टू भी नहीं हुआ था, isn't it? So हमेशा हमारे पास होप है. ये सिचुएशंस चेंज हो सकती है जो इंडिया में अभी हम लोग फेस कर रहे हैं. Like European countries, it is more than 53% nowadays. India is also going across and getting ahead in the mental health issues. Now, some more alarming threats worldwide, which I would like to keep in front of you are today about nearly 1 billion people live with the mental disorders. And in low-income countries, more than 75% people with this disorder, they do not receive treatment, as in India too. Every year, close to 3 million people die due to the substance abuse. ये जो सब्सटेंस अब्यूज करते हैं ये दो लोग, ये इसके पीछे का मेन रीजन उनको हैप्पीनेस का कुछ चाह रहती है, और ये हैप्पीनेस हमें ये सब्सटेंसेस देते हैं जो मे बी अल्कोहल है या तो अदर सब्सटेंसेस है. ये सब्सटेंसेस हमें कुछ तसल्ली देते हैं और हमारे स्ट्रेसेस को कम करते हैं, टेंशंस को कम करते हैं. ऐसा कुछ मिसबिलीफ होने के कारण लोग सब्सटेंस अब्यूज की ओर बढ़ रहे हैं. As the case of substance abuse, also every 30% of mental health disorder starts by age of 40. So 14 के पहले ये नहीं रहता है. Why नहीं रहता? Why? ये हम सबको सोचना चाहिए कि जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है या तो फिर सब्सटेंस अब्यूजेस है या तो फिर जो भी कुछ हम स्ट्रेसेस लेके चल रहे हैं, ये 13-14 के नीचे इतने तो नहीं थे. अभी आफ्टर 13-14 along with some biochemical changes in body, what extra is being cultivated in our life and what extra is playing its role in our life, that is to be studied and that is to be kept in mind, right? Then अभी जब स्ट्रेस आता है तो ये सिर्फ जान लेना है कि नथिंग इज परमानेंट, ये तो सब चेंज हो रहा है. स्ट्रेस आया है, जान लिया है कि किसी के कारण स्ट्रेस हो रहा है, तो do not stress yourself too much because no matter how bad the situation is, that is going to change. ये तो हमारी सृष्टि का नियम है कि कुछ भी परमानेंट नहीं रहने वाला है. एवरीथिंग इज गोइंग ऑन changing. ये सृष्टि का नियम है. This is the law of nature that everything keeps on
चेंजिंग, तो बैड सिचुएशंस भी ये चेंज हो जाएगी, इसको समझ लेना है, राइट। अभी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रेस फैक्टर्स ब्रॉडली फॉल इनटू 3 टाइप्स और बेसिकली द 3 कैटेगरीज, राइट। पहला जो है द फर्स्ट वन विच इज फिजिकल स्ट्रेस, second one is the psychosocial stress, and next one is psychospiritual stress, right. 82% population in India suffers from stress, 49% in Europe, 72.9% million people are suffering from diabetes, which is of diabetes 2, and in 1 in 4 deaths are due to heart diseases, and 80% of it are due to the heart stroke. ये सब क्या है? What are these figures says? All these figures says that these are the situations that are being caused in India, that are being arising in India. It is mainly the main culprit behind all this is the stress, which is being increasing day by day. अब ये जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हम लोगों ने देखे हुए हैं, तो इसी को हमने ये पिक्चराइज किया हुआ है। सो लेट अस गो अहेड। ये पिक्चर हमें क्या दिखाता है? देखो, कुछ भी जहां कुछ हम जाते हैं, घर में भी बैठे हैं तो भी स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस ये हमारा एक स्ट्रेस एक्यूमुलेट करने का हैबिट हो रहा है डे बाय डे, राइट। ये चाहे कुछ नहीं भी हो, तो that person that creates some problems and keeps himself or herself under the stress. हाँ, ये situations बहुत day by day बढ़ रही है। अब हम बढ़ते जाते हैं। Let us go ahead towards the types of stress. What is this physical stress? Dear friends, physical stress arises due to traumatic situations. Basically, maybe injury, maybe surgeries one has to undergo, or some infections, body infections. This causes some physical stress. Along with this, some intense physical level or overexertion, or also the environmental position is also a cause of physical stress. How the environmental pollution will affect the physical stress? So because of intake of pesticides, because of intake of herbicides, toxins, heavy metals, inadequate light, radiation pollution, noise pollution, electromagnetic field radiation, electromagnetic fields को हम जितना expose होते हैं, all these are causing the environmental pollutions to on our body. Then some illnesses, maybe viral, bacterial or fungal agents, some hormonal and biochemical imbalances too, some dietary stresses, nutritional कुछ deficiencies हो जाती है, food allergies हो जाती है, कुछ फूड सेंसिटिविटीज हो जाती है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स यदि हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है, सब्सटेंस अब्यूज होता है, डेंटल कुछ चैलेंजेस होते हैं, या मस्कुलोस्केलेटल और मिसअलाइनमेंट्स और इम्बैलेंसेस बॉडी में होते हैं, तो वी हैव टू फेस द फिजिकल स्ट्रेस, राइट। What about the psychosocial stress? This is another type of stress, psychosocial stress. It arises mainly due to relationship, some marriage difficulties. Nowadays this has been increasing again in each and every family. Because of extraordinary expectations from each other, these physico-social stresses are increasing in society. And in every house we find out such type of stress that is keeping its place over there. Then जैसे कि पार्टनर, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन में, फैमिली एम्प्लॉयर, को-वर्कर्स एम्प्लॉयर, इनके बीच में भी कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो जहाँ कहाँ डिस्प्यूट्स होते हैं सोसाइटी में, वहाँ ये सब साइकोसोशल स्ट्रेसेस वहाँ पे हमें पाए जाते हैं। फिर सम लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, कभी भी ह्यूमन नेचर ऐसा है, ह्यूमन नेचर फील्स दैट वी आर अलोन एंड वी डोंट हैव एनी सपोर्ट, राइट। यदि ये फीलिंग बढ़ते जाता है, लोनलीनेस, अलूफनेस यदि बढ़ते जाता है, तो ड्यू टू लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, lack of resources of adequate survival, loss of employment, investments, loss of savings, loss of loved ones,
Loudness, bankruptcy, home foreclosure, and isolation. These all causes the psychosocial stress. So we have seen that physical type of stress, environmental type of stress, internal emotional stress, life events, and some scheduled that is uh, associated with activities. ये थर्ड टाइप का जो स्ट्रेस है वो है साइको स्पिरिचुअल स्ट्रेस. ये क्यों आता है? तो ये बेसिकली इट अराइजेस बिकॉज ऑफ क्राइसिस ऑफ वैल्यूज. जो अभी ह्यूमन वैल्यूज हम डिप्राइव होते जा रही है. we are observing बिल्कुल जो स्कूलिंग का एज है, जो स्कूल गोइंग किड्स है, इनमें यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है. जो ह्यूमन वैल्यूज बहुत डिप्राइव होते जा रहे हैं दिन ब दिन, उसके कारण ये साइको स्पिरिचुअल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. Then joyless striving instead of productive, satisfying, meaningful and fulfilling work, a misalignment with one's core spiritual beliefs. हाँ, इससे ये these are the reason to cause the psycho spiritual stress. Basically, for all these three types of stress, the main reason, the main situation which arises to get the victim of the stress is that it is the less time, less energy, and lot of work pressure to do this type of situation. That is to do or die type of situation that creates a lot of stress. And this is the main reason. This is the main reason. What is the main reason behind all types of stress? It is the less time, less energy. Energy नहीं रहती हमारे में, और lot of work pressure रहता है. ऐसे वक्त we become the victim of this stress. Psycho spiritual approach to personal growth and healing. Some spiritual therapies से हम ये psycho spiritual जो stress है इसको overcome कर सकते हैं. Healing techniques है, कुछ relaxations है, and stress management बहुत ज्यादा important है, right? We are emphasizing on today's lecture on of now what are the impact of stress on body, that will just discuss fastly. Overall, improperly or ineffectively managed stress usually takes a toll on body. When the stress related feelings, moods, emotions that are pushed into the body, the soma, that this is usually termed as psychosomatic or psychogenic illness, including headaches, functioning of system, the hypertension, syndrome, all are caused by the stress. All are now. What is the meaning of the word soma? Right. Further, we also can discuss and result in suppressed immune function, increased susceptibility to infectious and immune-related diseases, including cancer. Emotional stress can also result in hormonal immune functioning of now. Dear friends, there are mainly two enemies of the human body. There are two enemies of the human body. These two enemies are named as the stress hormones, and they are the main culprit to cause the stress in our human body. And ये दोनों ही ऐसे है, ये
जो स्ट्रेस हार्मोन्स है ये ही हमें हमारे नेचुरल स्टेट से बहुत डिस्टर्ब स्टेट में ले जाते हैं. What are these two? The two hormones, basically, the two hormones, cortisol and adrenaline, are termed as the stress hormones. Whenever we have to face the situations like do or die, or to flight up situation, fly and flight, ये सिचुएशंस अब हमारे हमें फेस करनी होती है जहां कहाँ भी हैं हम, तब ये दोनों बंदे एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल अपना प्ले करना चालू करते हैं ह्यूमन बॉडी. They are the main culprit to cause the stress in the human body, and hence are called as the stress hormones. Let us go ahead. What are further impacts? We will just go past. Some cognitive, emotional, and behavioral types of, then then physiological and social. Some impacts are also seen on stress of the stress on human body. We will just go through it some very fast. The cognitive impact which we see as a impact of stress on human body are anxious thoughts. हमें हमेशा ऐसे fearful और anxious thoughts होते रहते हैं. जनरली ये adolescence में या तो फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट यूथ एज होता है, इनमें बहुत ज्यादा होते हैं. या तो फिर जो लेडीज कुछ मेनोपॉजल स्टेज में होती है, या तो फिर सब बहुत हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जब फेस करने होते हैं, तो फिर कॉग्निटिव थॉट्स, ये कॉग्निटिव टाइप का स्ट्रेस जो होता है ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज्यादा प्ले करता है. इसमें क्या होता है, फिर बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है, एंशियस थॉट्स आते हैं, फियरफुल एंटिसिपेशन होता है, पुअर कंसंट्रेशन और डिफिकल्टी विथ मेमोरी. ये सारे रीजंस है, ये सारे सिम्टम्स है कॉग्निटिव थॉट्स के. फिर इमोशनल स्ट्रेस के इमोशनल इम्पैक्ट्स भी हमें दिखते हैं स्ट्रेस के ह्यूमन बॉडी पे. सम फीलिंग्स ऑफ टेंशन, बहुत टेंस है हम, बहुत स्ट्रेस है, ऐसा दिखता है, ऐसा हमेशा ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो भी है, अभी मुझे बहुत गड़बड़ी लग रही है, हड़बड़ी लग रही है. तो ये जो फीलिंग होता है हमेशा टेंशन का, टेंस इरिटेशन होता है, कुछ रेस्टलेसनेस होता है, वरीज, अननेसेसरी वरीज आ जाती है और रिलैक्स नहीं हो पाते, डिप्रेशन जैसा फीलिंग बढ़ते जाता है. ये सब इमोशनल स्ट्रेस के सिम्टम्स है, राइट. all of we go through this, right, across through all such situations we have faced in our life too many times. So इसको हम अभी साइंटिफिकली जब जान लेते हैं तो हम इसको बहुत जल्दी से इससे छुटकारा पा सकते हैं. कैन बी फ्री ऑफ ऑल दिस थिंग. अभी नेक्स्ट टाइप का जो इम्पैक्ट दिखता है वो होता है बिहेवियर. ये कैसा, तो अवॉइडिंग ऑफ टास्क. हम जब भी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तब कहीं भी हम लोग कॉलेज के सब स्टाफ मेंबर्स हैं, तो जहां कभी कॉलेज में कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात चलती है तो हमेशा पहले आप चलता है, isn't it? तो ये जो टास्क का अवॉइडेंस है ये भी हमारा बिहेवियरल स्ट्रेस के कारण होता है. स्लीप प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी इन कंप्लीटिंग वर्क एंड डिफिकल्टी इन कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स टू. देन ट्रिमर्स, बहुत ज्यादा ट्रिमर्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है तो ट्रिमर्स भी आते हैं. देन सम बहुत ऐसा थका उदास, ऐसा जो चेतनाहीन, बिल्कुल उत्साहहीन जब फेसेस हम देखते हैं ना हम लोग समाज में, ये सर नो, तो ये सारे इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस होते हैं, बिहेवियरल स्ट्रेस के कारण होता है. हम ही खुद के बिहेवियर के कारण वैसे बनावटी चेहरे के बहुत ज्यादा विक्टिम बन जाते हैं. क्राइम, चेंजेस इन ड्रिंकिंग, ईटिंग और स्मोकिंग बिहेवियर्स, ये सारे इम्पैक्ट हमें जो दिखते हैं ये बिहेवियरल टाइप के इम्पैक्ट दिखते हैं. नेक्स्ट, ये जो और कई स्ट्रेस के इम्पैक्ट है, ये जैसे हमने अभी कहा, दे आर फिजियोलॉजिकल एंड सम सोशल टू. अब फिजियोलॉजिकल क्या होते हैं, तो हमारी जो फिजियोलॉजी ह्यूमन बॉडी की, इसके अंदर भी जैसे जैसे ये सब स्ट्रेस हम लेते जाते हैं, जो मे बी बिहेवियरल हो, मे बी कॉग्निटिव हो, मे बी इमोशनल हो, तो ये जो बेसिकली 3 टाइप के स्ट्रेसेस के अंडर ही ये सब टाइप्स आते हैं. तो इनके कारण क्या होता रहता है कि हमारे फिजियोलॉजी भी चेंज हो जाती है.
ये जो बॉडी की फिजियोलॉजी जब चेंज हो जाती है तो क्या होता है कि काफी स्टिफ और टेंस मसल्स हमें फेस करने पड़ते हैं। फिर ग्राइंडिंग टीथ, स्वेटनिंग, बहुत ज्यादा स्वेटनिंग होता है, अननेसेसरी स्वेटनिंग होता है। हम देन टेंशन होती है, हेडेक्स होते हैं, फेंट फीलिंग्स होती है, चोकिंग फीलिंग होती है, डिफिकल्टी swallowing, stomach ache, nausea, vomiting, loosening of bowels, constipation, frequency and urgency of urination, loss of interest in sex, tiredness, shakiness or tremors, weight loss or weight gain, and awareness of heartbeat. ये हार्टबीट हमें, हम कहते हैं ना, हमारे दिल की धड़कन हमें सुनाई दे रही, धक 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 धक। ये क्यों होता है? ये तभी होता है जब हमें कुछ टाइप का स्ट्रेस हम लोग ले रहे हैं, कोई बात हम कर नहीं पा रहे और करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रही है, ऐसा भी जब सिचुएशन है, ये सारे टाइप के जब सिचुएशंस को हमें फेस करना पड़ता है, तब ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी इसको इस टाइप का रिस्पॉन्स देती है और we come across to it. Next is social. Social is some people in stressful times tend to seek out others to be with. Other people withdraw under stress. क्या कहते हैं इसको? FOMA करके एक टर्मिनोलॉजी, FOMA, FOMA means FOMA is fear of missing out. फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी हम सभी सोसाइटी में रह तो रहे हैं लेकिन हमें लगता है कि हम मिसिंग आउट है, कहीं तो भी हमें अटेंशन नहीं मिल रहा है, कहीं तो भी हमारा रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, कहीं तो हमारा बात नहीं मानी जा रही है, समवेयर अदर वेयर फियर ऑफ मिसिंग आउट ये बढ़ने लगता है, फोमा, राइट? Some people in stressful times tend to seek out others to be with. Other people withdraw under stress. ये स्ट्रेस के कारण सब हम विड्रॉल, जो हमारे विड्रॉल टेंडेंसीज है बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है. ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, इसी के कारण फिर क्या होता है, रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं. हाँ, एंड ये सारे इंटर रिलेशनशिप जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? सो नेक्स्ट, अभी आगे कुछ जो अभी हमने जैसा कहा, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं, राइट? ये जो साइको इज द, ये साइकोसोमेटिक इस वर्ड में दो वर्ड्स है. One is somatic, that is related to soma, and other one is psycho, which is related to psychology. Now, soma means the hello, 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 hello. Are you able to hear me? Hello. So the the term psychosomatic includes two types of word. One is psycho and other is soma. Now psycho term is associated with the psychology of the human, and soma is associated with the tissues and cells of the human body. Now, psychosomatic disorder, this is the common symptom or the common sign of the stress that has been accumulated in the human body. ये psychosomatic जो disorder है, it is a condition in which the psychological stresses adversely affect the physiological, that is somatic functioning to the point of distress. It is a condition of dysfunction or structural damage in bodily organs through the inappropriate activation of involuntary nervous system and the glands of internal secretion. Thus, the psychosomatic symptom emerges as a physiological concomitant of an emotional state. ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये हमें नर्वस ब्रेकडाउन की ओर ले जाती है, इमोशनल ब्रेकडाउन की ओर ले जाती है, और
इसका अल्टीमेट जो इफेक्ट होता है वो सारा हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट होना चालू हो जाता है। साइकोसोमैटिक मीन्स the one which is associated with psychology but causing the effect on the human body, right? अब ये साइकोसोमैटिक डिजीजेस सब ऐसा, the recent researches reveals that around 70% 70 to 80% of diseases are psychosomatic diseases. Could you hear me? Hello, could you hear me? Yes, ma'am. Okay, some disturbances are over there. Okay, so the psychosomatic diseases, these diseases are the disorders in the human body. They are basically they are disturbing our psychology basically, and the disturbed psychology is affecting our body. This is the now the recent studies has revealed that recent researches has revealed that around 75% of the diseases are psychosomatic diseases. You see how psychology is playing its role in the illness of the body. A psychosomatic disorder is a disease which involves both mind and body. अब जो साइकोलॉजी भी है इसमें और बॉडी के टिश्यूज भी है, तो ऑब्वियसली साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो 75% डिजीजेस है, कि माइंड और बॉडी पे हो रहा है इफेक्ट। जो फिजिकल कुछ डिजीजेस जैसे हम कहते हैं कि जो जिसको हम विदाउट मेडिकेशन कुछ मेडिकेशन हम जिसको ओवरकम कर सकते हैं, ऐसे भी कुछ डिजीजेस होते हैं तो उसको हम फिजिकल डिजीजेस कहते हैं। अब ये स्ट्रेस जो ये डिजीज है, स्ट्रेस हम ले रहे हैं बाहर से, वी आर ब्रिंगिंग अप टू आवरसेल्फ, हम बाहर से हमारी ह्यूमन बॉडी पे उसको ला रहे हैं, वी आर एक्यूमुलेटिंग फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम आवर एनवायरमेंट, फ्रॉम आवर neighbors, from our friends, through our all the colleagues, through our whatever situations we are facing, whatever we are facing day by day, we are accumulating stress from outside, and these are called the basically it is called as a physical stress. Some physical diseases like anxiety are being caused by the such physical disease. Mental state of human being is responsible for many psychosomatic disorders. अब जैसे कहा जाता है कि 75 to 70 to 75% of diseases are psychosomatic diseases, mental situations और mental health से associated है, तो इसी का मतलब है कि साइकोलॉजी बहुत ज्यादा प्ले कर रही है उसका रोल हमारे डिजीज कॉजिंग टेंडेंसी में और डिजीज ओवरकमिंग दिस टेंडेंसीज में, और डिजीज में रह रहे जो लोग उनमें भी ये जो टेंडेंसीज है, जो साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज है, दैट आर प्लेइंग एन इमेंसली इंपॉर्टेंट रोल, राइट? नाउ अब ये जो अभी जो ये हमने देखा है, तो we can easily overcome the stress and anxiety too. Now psychosomatic disorders resulting from stress may also include hypertension, respiratory ailments, gastrointestinal disturbances, migraine and tension, headaches, pelvic pain, impotence, frigidity, dermatitis, then ulcers. Then term psychosomatic, as and then I am again and again repeating, it refers to real physical symptoms that arise from or emotions, mind and emotions. Dear friends, ये mind game बहुत important है,
Emotion game and mind game is very important. Wherever we are doing our job, maybe at house or society or at workplace, we have to look after this mind and emotions as and then, rather than a specific organ cause in the body, organic cause in the body, such as an injury or infection. अभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो कोई एक ऑर्गन पे होता है, फिर वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये स्ट्रेस, ये साइकोसोमेटिक डिजीजेस जो है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होते हैं किसी एक सिर्फ एक ऑर्गन का, उससे यानी एज रिलेटेड टू साइकोसोमेटिक डिजीजेस, एक कोई ऑर्गन का जो इन्फेक्शन है वो बहुत कम लेवल का होता है. Psychosomatic illness originates from or it is aggravated by emotional stress and it manifests in the body as physical pain or other symptoms which are given above. Now let us see the biochemistry in brief. Also, the stress hormones which are also known as adrenaline or epinephrine. Now this what is the role of this adrenaline or epinephrine? ये हार्मोन कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं बॉडी में, ये देखते हैं. इट इज नेचुरली ऑकरिंग हार्मोन इन बॉडी एंड दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग द बॉडी स्ट्रेस रिस्पांस. ड्यूरिंग द फाइट और फ्लाइट रिस्पांस, द एड्रेनल ग्लैंड रिलीजेस एपिनेफ्रिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. और ये एपिनेफ्रिन का ही एक पार्ट होता है जो कॉर्टिसोल होता है. ये क्या होता है, ये एड्रेनलिन जो ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, जब कभी भी हमें फाइट और फ्लाइट की सिचुएशंस फेस करनी होती है, ऐसे वक्त, फॉर एग्जांपल कुत्ता दौड़ रहा है पीछे, तो व्हाट विल डू, हमको या तो टाइगर, बाघ, ये टाइगर हमारे पीछे लगा हुआ है, हम दौड़ रहे, व्हाट विल हैपन, ये फाइट और फ्लाइट जो सिचुएशन होती है, ऐसे वक्त में एड्रेनलिन जो है, एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है एंड इट रिलीजेस एपिनेफ्रिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. जैसे ही एपिनेफ्रिन ब्लड में आ जाता है, इमीडिएटली कॉर्टिसोल को पता चलता है चलो हमारा बंधु आ गया है, कॉर्टिसोल का भी सिक्रेशन बढ़ने लगता है. और ये इतना अननोइंगली होता है, ये इवन तो कहीं हमारी एंगर भी बढ़ती है, या तो कुछ हम जो चाहते नहीं ऐसी सिचुएशंस को फेस करते हैं, तो ये लेवल हमको unknowingly we have to face the increasing levels of these two in our blood stream. ये जो blood stream में along with the cortisol or adrenaline which jumps in the blood stream, it does the following things in the blood stream. It signals the heart to pump. That signals becomes quite harder. वेट लॉस होता है, उससे एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, पैल्पिटेशंस बढ़ जाते हैं. ओवर टाइम persistent surges of adrenaline damages your blood vessels, increases the hypertension, blood pressure and elevate the risk towards heart attacks or strokes. It can also result in anxiety, weight gain, headaches and insomnia too. Some examples, again I am repeating psychosomatic disorders as they are playing a very important role in our human life. These are the psychosomatic disorders resulting from the stress includes basically and mainly hypertension, respiratory ailments, gastrointestinal disturbances, hysteria also, pelvic pain, impotence, frigidity, dermatitis, ulcers and cancers too. Cancers are basically psychosomatic disorder. It is not a disease, my dear friends. Keep in mind. Yes, जैसे हमने अभी देखे हैं, जहां जहां से हम स्ट्रेस एक्यूमुलेट करते हैं, उसका जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, कहीं तो भी टिश्यूज बिल्कुल and the psychological situations, physiological situations, psychological as well as physiological as well as our stress situations यदि हम हैंडल कर पाते हैं तो
we never have to come across these cancers. Even diabetes, nowadays the rate of diabetes is very much increasing in India, as all we know that among 10 people, mental illness, multiple sclerosis. Multiple sclerosis is a disease which is caused due to autoimmune disorder. जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका डिसऑर्डर यदि हो जाता है, उसमें कहीं क्या उसमें कहीं कोरिलेशन नहीं बन पाता ठीक से, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस या तो सिजोफ्रेनिया या तो अल्जाइमर्स, ये सारे डिजीजेस को हमें we have to come across through it, right? So मेंटल इलनेस को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की इंडिया में अभी बहुत ज्यादा इसका जो रेशो है बढ़ते जा रहा है. दैट विल कम हियर आफ्टर. अब ये जो है ये सब हमने देखा हुआ है कि वरीज है, टेम्परामेंट, लूज टेम्परामेंट्स है, फिर टेंशंस है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स है, फिर डिप्रेशन है, विड्रॉल बिहेवियर है, ओवरवेलम पैनिक और फटिक बिहेवियर है, फटिक लग रहा है हमें, फेल्यूर बिहेवियर है, निगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रही है, एंजाइटी हो रहा है, लोनलीनेस फील हो रहा है, एजिटेशन हो रहा है, स्केर्डनेस हो रहा है, इंसोम्निया लग रहा है. ये सब साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के ही सिम्टम्स है. अभी इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस मेंटल कंडीशंस क्या होती है, तो रिड्यूस डेवलपमेंट, पॉवर्टी फॉर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, families, inequality between different population groups, reduce social capital, ये सारे ये जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दिखते हैं. हाँ, तो जो हमें इकोनॉमिकल पे या तो टोटल ग्रॉस डेवलपमेंट पे जो कुछ हमें इफेक्ट दिखते हैं, तो उनमें से कुछ ये इफेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली इसको बहुत अनदेखा किया जाता है. रिड्यूस सोशल कैपिटल, hindered economic development at societal level, some increased vulnerability, stigma and discrimination, violence and abuse, then restrictions in exercising civil and political rights, then exclusion from participating fully in society, ये जो loneliness, aloofness आता है, reduced access to health and social services, reduced access to emergency relief services, lack of educational opportunities, exclusion from income generation and employment opportunities, increased disability and the premature death. Then some worsen mental health जो conditions होती है, उनमें से उनके कारण सैडनेस आती है, टायर्डनेस आता है, होपलेसनेस आता है, हेल्पलेसनेस आता है, फियर आता है फ्यूचर के बारे में, सोशल विड्रॉल टेंडेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ती है जो अभी हमने फोमो करके डिस्कस किया. देन इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स दे आल्सो अराइज अ लॉट. स्लीप एंड ईटिंग प्रॉब्लम्स बढ़ती है. स्लीप एक बार डिस्टर्ब हो गई कि ईटिंग हैबिट्स और ईटिंग प्रॉब्लम्स, फूड प्रॉब्लम्स, फूड intake problems, they also increase. difficulty in concentrating and problem solving, problem solve कर ही नहीं सकते ऐसे लोग. अभी ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशंस कोविड के बाद इंडिया में दिखने लगी हुई है. डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ वी हैव टू कीप concentration on it and we have to think over it. जो करंट स्टेटस है ग्लोबल मेंटल हेल्थ का और इंडियन मेंटल हेल्थ का, वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. The mental health is one of the most neglected areas of the health situations globally. मेंटल हेल्थ जो होता है उसकी ओर बहुत ज्यादा निग्लेक्टेंस दिखता है. अभी कोई बिहेवियर ठीक नहीं कर रहा है तो उसको, वो बंदे को निग्लेक्ट किया जाता है, भले कि उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, फिर भी उसको वो
खुद बंदा भी ट्रीटमेंट लेने के लिए राजी नहीं होता है, और घर के लोग या तो सोसाइटी के लोग भी बेटर स्टार्ट टू निग्लेक्ट हिम. और this tendency is being increased by day, not only in India but throughout the global. This was true before COVID-19 coronavirus, but the pandemic has further worsened the status of mental health. थोड़ा बहुत ठीक था 2016-17 तक के, but after the COVID, these situations have been worsened out. In a national survey on mental health and coronavirus, it has been found out that COVID-19 pandemic has affected the mental health of 50. Dismantling the stigma around a mental illness is important now more than ever. अभी इसको बहुत ज्यादा देने का, बहुत अलार्मिंग सिचुएशंस इंडिया में भी अराइज हुई है. Now, as per the studies that has been carried out, National Mental Health Survey conducted by National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMHANS. ये NIMHANS ये जो, हाँ, yes, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you. NIMHANS जो है, ये NIMHANS is an internationally renowned research institute in India, which works for the mental health and neurosciences and associated disorders and diseases. And it is basically a research institute, and the researchers carried out over here in the National Institute of Mental Health and Neurosciences. It has been found out that about 70% to 80% persons in India, they are struggling with mental illness as they receive no care. Is this not an alarming situation, dear friends? This is very much alarming situation that is being growing day by day. Now, ऐसा कहा जाता है इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन यूथ पॉपुलेशन. यूथ का जो पॉपुलेशन है ये वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा है, और यदि ये सिचुएशंस इतनी ज्यादा ग्रो हो रही है, इसका मतलब मेंटल इलनेस किस में ज्यादा ग्रो हो रहा है, ये ज्यादा बताने की, इलैबोरेट करने की जरूरत मुझे लगती है. Further, it has been said that nearly 15% of Indian adults above 18 years are in need of active interventions for one or more mental health issues. It has been found out that further 150 million people need mental health care, and among them only 30 million people actually get such treatment. अब ये हमें हर बार देखते जाना है कि the person comes across through or comes in front of us, then ऐसे ये सब patients है करके we have to ask them to get the treatment, right? अभी can your mind create physical symptoms for and diseases? देखो, जैसे हमने कहा है कि हमारा जो है, हमारा जो माइंड है, माइंड प्लेस अ वेरी, साइकोलॉजी प्ले करती है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी हमारी बॉडी डिजीज के लिए सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही है. तो हमें जो फिजिकल सिम्टम्स जो है डिजीजेस के, ये पहले मिलने ही चाहिए. एंड ये मिलते हैं क्या? तो इसका आंसर है यस. हमारा माइंड हम ये फिजिकल सिम्टम्स डिजीजेस के पहले ही देता है through our body. According to Carla Manley, a PhD, a clinical psychologist and author, says that experience a range of physical symptoms such as muscle tension, pain, headaches, insomnia and feelings of restlessness. ये यदि chronically होते है, so we have to look after, see that whether we not, right? If such symptoms are becoming chronic, then we have to take care of it.
Again, one more important notice. Physical diseases which are caused by any foreign bodies or other physical factors can be treated either through medications or through surgeries or some medical treatment. But the complete cure from and only when mental stress is totally eliminated. Unless and until our body cannot, the one has to get cure or to come out of any illness, he has to come out of the mental stress first. Then and only then the patient or the person becomes completely cured. Again, we will discuss in brief the signs and symptoms of stress. Common physical signs of stress include butterflies in stomach. Some कहते हैं ना गुड़गुड़ा हो रहा है कुछ स्टमक में. Palpitating heart beats, then sweaty palms, feet, hypertensions, depending upon the person to person, as well as the psychological and physiological well-being of that person. For example, women often report symptoms such as fatigue despite getting enough sleep, irritability, abdominal bloating, and changes to their menstrual periods, PCOD-like diseases. Once you identify the signs, you can work on yourself on reducing and eliminating the effect of stress on your health. Again, in men, if we have seen in women, then we will come to men. On the other hand, they are more likely to include the chest pain, increased blood pressure by age. Children often display the stress through their bodies because they have not yet developed the language they need to communicate how they feel. है ना? बचपन से हम इमोशंस एंड फीलिंग एक्सप्रेस करने की बच्चों को हम आदत ही नहीं लगाते. So they are not able to properly feel. They are not able to express how they feel. For example, a child who is having a hard time at school may have frequent stomach aches and may be sent to home ऐसे बच्चे को मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक होती जा रही है. Madam, something disturbances from your side. हेलो मैम. हेलो मैम. हेलो. 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 हाँ मैम, आपकी Hello, ma'am. आवाज ब्रेक होती जा रही है बीच में. अच्छा, अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है मैम. Okay, you just inform me whenever my अभी भी ब्रेक होती जा रही मैम आवाज. okay.
Now, hello. हाँ मैम, यस मैम, हाँ यस मैम, Am I audible? Hello. Yes, हाँ ma'am. यस मैम, Am I audible यस now? यस, Am I audible now? Okay. Now the signs and symptoms of the stress. Hello. यस मैम, Yes. Am I audible now properly? यस यस यस, Just a minute. So, we have seen that the symptoms of stress vary by age. Symptoms of stress vary by age. Children often display the stress through their bodies because they have not yet developed the language. And for example, a child, I was explaining this point. For example, if a child who is having a hard time at school may have frequent stomach aches, or her, and how he or she is feeling at the school, at the school, right? So stress in the teen years can be easily or can be especially intense, particularly during periods of, so teenagers में hormonal shift के कारण stress बढ़ते जाते हैं. Now, as per the World Health Organization, it has been very nicely explained that depression is the most common mental disorder globally seen. More than 264 million people of all ages are getting suffered from depression. Depression is a leading cause of disability worldwide, and it is a major contributor to the overall global burden of the disease. तो ये हम आते हैं कि WHO क्या कहता है कि सबसे ज्यादा जो मेंटल इलनेस कॉज करने वाला जो मेन जो सिम्टम है वो है डिप्रेशन. और ये डिप्रेशन ग्लोबली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. As now, just I have discussed with you, it is more than 54% nowadays in European countries. American countries also, in US and USA also, it is too much growing very fastly nowadays, as also that in India. Depression is a leading cause of disability worldwide, and it is a major contributor to the overall global burden of disease. More women are affected by depression than the men. अब डिप्रेशन में यदि रेशियो देखा जाता है तो women are more victim of depression than as compared to that of the men. Depression can lead to suicidal tendencies too. India and China show the highest ratio of the depression worldwide, that is being increasing day by day. Right? So ये हमने एक केस स्टडी लिया हुआ है डिप्रेशन का. So let us go ahead. Now, how to get rid of all such situations that are causing so much different types of stresses on us. Day by day, as the stressful situations we are going to face, and we are being faced in the society as well as at home as well as at workplaces, wherever we go, we are getting across through it. So what is the antidote to get free from such stress? Now my next part of my lecture is to give you some techniques to distress yourself. Now, dear friends, the
as we see that to distress ourselves has to become a daily habit. It has to become daily habit. We have to cultivate this habit, and that too from childhood or the schooling age. This habit has to be cultivated by the human being, so that throughout in the life, throughout the human life, such some technique should be with us, so that we should be able to get rid of the stress daily and distress ourselves very easily. Experiencing some stress is normal. अब कभी कभी क्या होता है कि यदि स्ट्रेस ही नहीं रहा, कुछ ये स्ट्रेस से हमें भागना ही यदि चाह रहे, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस जो होता है वो हमें आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी होता है, टू गो अहेड, टू टेक अस अहेड थ्रू आवर पाथ, टू improve ourselves, to progress ourselves through our path. Some little stress has to be there. Such stress is called as positive stress. But this stress, when exceeds to its limits, and when it starts showing symptoms on the human body, then that becomes very fast, it becomes uncontrollable. And hence, even though it is true that some stress has to be there, we have to cultivate one habit daily to distress ourselves, so that positive stress should be with us always, and the negative stress should be removed by our body, and we should get rid of and be free from such negative types of stress from our body. Such type of techniques are available nowadays, and how to manage such types of stress, that we are going to my lecture. Friends, the stress should not go out of control of one's body limits, because such situations are very hard to manage, very difficult to manage. Hence, it is very, very important to make a habit to distress daily, which is multifoldedly beneficial for our life. और जनरली हम लोग यहीं पे बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं. हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम खुद को बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं. We give very less importance, we give very less importance to ourselves. हम सोचते हैं कि स्ट्रेस रिलीजिंग टेक्निक्स जो कुछ है, इसको अप्लाई करने के लिए कुछ एज लिमिट के बाद ये सारा यूजफुल होगा. नॉट नाउ, नॉट नाउ, नॉट नाउ. ऐसे करते करते we are accumulating lots of stress in our body, in our mind, and we are getting the victim of, we people are getting the victim of stress that is being increasing day by day, and by just getting the victim of such stressful psychosomatic diseases, and becoming patients of it, right? ये यदि नहीं होता तो डॉक्टर की जो इतना ज्यादा हम लोग देखते हैं हर एक फिजिशियन के, और बहुत ज्यादा nowadays too much rush over there we are observing, right? यदि हम ये साइकोसोमेटिक डिजीजेस को अपनी ओर से कंट्रोल करना चालू कर देते हैं, तो you know our body becomes very happy, healthy, and very healthy, and we will be very happy also. Now, what is the key to
लिव द हेल्दी लाइफ। अभी हेल्दी लाइफ हमें यदि हम जीना चाहते हैं तो हमें ये तो सबसे पहले कल्टीवेट करना है कि कुछ तो भी सम और अदर वे वी हैव टू कल्टीवेट सम आर्टिकुलेट्स, दैट इज सम आर्ट। हमें कोई आर्ट यदि आती है, यदि कुछ हमारी हॉबीज होती है तो उनको कल्टीवेट करना है। लेकिन दैट such hobbies which we are cultivating from our childhood, that gives us happiness, but up to a limit only, because when we move ahead and ahead with our habit, with our hobbies, some or other way we are going to accomplish it. That is, we feel ourselves to be a master on it. Again, the process in getting mastery in it, that is again causing the stress on us. So it becomes a vicious circle. Even though we have some hobbies and we are cultivating hobbies, that cannot be a good source or a good source to get rid of the stress. So how to get rid of the stress and how to on ourselves, that we have to study, we have to keep watch on ourselves only, whether behavioral changes are we are observing in ourselves, whether some body changes we are observing in ourselves, whether some illness is being arising in our body. We have to keep on assessing this regularly. So what are the keys to healthy life? We have to cultivate the habit first. नहीं कह सकते कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होगा, भी ऑलवेज इन आवर कंट्रोल। सो इसको स्ट्रेस आउट करने के लिए यदि बढ़ जाता है तो सब छोटी छोटी बातें भी हम कर सकते हैं जिससे हम थोड़ा स्ट्रेस से थोड़ा बाहर आ सकते हैं। तो ये कौन सी है? तो वी कैन डांस इट आउट, वी कैन गो फॉर ए वॉक, वी कैन टॉक अबाउट इट। हम स्ट्रेसफुल होते तो हम कम्युनिकेट नहीं करते, एक दूसरे को से बात करना भी हम लोगों को बहुत कमी लगती है उसमें, कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते कि भाई साहब या हमें कुछ स्ट्रेसफुल लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी लो, आई एम फीलिंग लो इन एनर्जी, आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेसफुल। ये हम कम्युनिकेट भी करना नहीं चाहते हैं। सो वी हैव टू कम्युनिकेट, we have to convey to some or other way, to some or other person, that feeling we are feeling stressed life, right? We have to talk about it. Then we have to go bed to earlier, get up earlier. We have to get up earlier, we have to go to bed earlier. ये तो सारी बातें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन कुछ हो जाता है ऐसा कि हम किसी कुछ ऐसे, हमारे पास अभी एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जिसका नाम मोबाइल है, तो उसमें भी हम इतना टाइम दे देते हैं, तो टाइम कैसा निकलता है, ये सारा हमारा रोज की डिसिप्लिन के बाहर निकल जाता है टाइम, है ना? तो ये सारी डिसिप्लिन के कभी कभी बहुत बार हम इन डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी पाते हैं, and the stress becomes starting playing its role. Focus on what you can control. अभी हम जो कंट्रोल कर सकते हैं ना, उस पे हमेशा फोकस करना चाहिए। What is in our control, that is to be seen first. हम लोग जनरली ऐसा देखते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है उसी के पीछे हम भागना चाहते हैं, और उससे स्ट्रेस कम नहीं होता है, बल्कि उससे स्ट्रेस और बढ़ते जाता है, राइट? Reminisces your about good times. हमको खुद को हमारे जो गुड टाइम्स हुए हैं उसको बार बार याद करते रहना है और ग्रेटिट्यूड में रहना है, राइट? फिर
ask for a hug. And ये सब भी सिचुएशंस में यदि हम स्माइल रखते हैं तो स्माइलिंग फेस, स्माइल हमारी मेंटेन कर सकते हैं, तो वी कैन इजीली ओवरकम द स्ट्रेस। बैड सिचुएशंस में भी यदि हम कुछ स्माइल यानी हम लोग हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड कल्टीवेट करते हैं तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस के विक्टिम नहीं होते हैं, राइट। नेक्स्ट, अभी ये तो देख ही लिया हमने, बार बार यही बता रहे हैं कि हमारे जब हम इमोशंस के बहुत ज्यादा विक्टिम बन जाते, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हम पे हावी हो जाते, बेटर डिसीजंस नहीं ले पाते। जब भी हम इमोशंस के विक्टिम है और ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में इमोशंस लेते हैं, हमेशा ऐसे जो कुछ हमारे डिसीजन होते हैं वो सब फेल होते हैं, राइट। तो ऐसे कहा भी जाता है कि जब हमारी इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, कोई भी टाइप की इमोशंस यदि स्ट्रांग है तो ऐसे वक्त डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। दैट इज नॉट गुड स्टेट ऑफ माइंड टू टेक गुड डिसीजंस, राइट। और ऐसे जोन में ऐसे कुछ ब्रेन्स होते, अपने ब्रेन में कुछ ऐसे जोन होते हैं जो हमें ये सब करने के लिए, जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमें ऐसे डिसीजंस लेने के लिए बहुत हावी कर देते हैं। लेकिन यदि हम ये जान पाते कि हम इमोशंस के अभी बहुत स्ट्रांग इमोशंस हमें हो रही है, तो ऐसे वक्त कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये जान लेना ये बहुत जरूरी है। वी हैव टू know it, we have to cultivate the habit to know about the amount of stress which we are overcoming or which we are getting across. फिर स्लो डाउन योर हार्ट रेट, ये हार्ट को काम और ईज करने के ये भी हमारे हाथ में है। इसको कैसे हार्ट को हेल्दी कैसे रखना है, हेल्दी फीलिंग रखना है, कैसे हमको हेल्दी फीलिंग कैसा मेंटेन करना है, ये सब हमारे हाथ में वी हैव इन आवर हैंड। वी हैव टू लुक आफ्टर इट, वी हैव टू थिंक ऑन ओवर इट। ये सब पे हम इस पे थिंकिंग ही नहीं करते। वी नेवर एक्सप्रेस इट, वी नेवर कम्युनिकेट विथ ईच अदर, वी नेवर गिव द प्रायोरिटी to such types of things in our day-to-day life. हमारा हार्ट रेट, हमारा हार्ट बीट, इसको प्रॉपर अलाइनमेंट में कैसे मेंटेन करना है ये हमारे ही हाथ में है। इसको कामनेस और ईज में कैसा रखना है ये हमारे ही हाथ में है, राइट। टू फील कॉन्फिडेंट we have to cultivate the habit to feel confident on ourselves. This can be possible only when we get rid of the stresses. We have to cultivate good quality of energy and have to maintain every day such type of energy throughout the day till our day ends up. We have to get this energy and maintain it. This is also we have to cultivate the habit, and can be possible only if our mind is calm and cool. We have to cultivate the habit of feeling happy and healthy. Happiness ये cultivate करने की बात है। Happiness हमको हमेशा ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग हमें कल्टीवेट करने की बात है, ये हमें कोई भी बताता नहीं है। हमें हैप्पीनेस को कल्टीवेट करना होगा। हमारा जो हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड है इसको बरकरार बनाए रखना होगा, और इसको ये स्टेट ऑफ माइंड को बनाने रखने के लिए जो बातें हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं, उससे यदि हम ये नहीं पा रहे हैं तो वी हैव टू लुक आफ्टर इट एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट एंड वी हैव टू ट्राई टू गेट rid of it, and we have to maintain and always keep and go on elevating always our happy state of mind.
हमारा हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, इसको बरकरार ऑलवेज हैप्पीनेस में बनाने के रखने के लिए हमको बहुत सारे एफर्ट्स लेने होंगे। जैसा हम डेंटल इलनेस, हमारा डेंटल, हम उठते बराबर जैसे ही हम टूथ ब्रश करते हैं, जो डेंटल हाइजीन के लिए करते हैं, वैसे ही हम रोज जब व्हेन वी गेट अप, हमें हमारा मेंटल हाइजीन की ओर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना, ये अभी दिस हैज बिकम नाउ द नीड ऑफ एन आवर, राइट? लास्ट बट नॉट लीस्ट, माय thank you for all of you for your patient hearing. Now at this stage I am ending up my first presentation, and I think some 5 to 10 minutes break is over there after four, after now it's 4:20, I think. So at 4:30 we will start our next lecture. Thank you for one and all. Thank you for your patient hearing. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. हेलो हेलो हेलो, यस सर। आवाज बंद हो गई। नहीं, ब्रेक है अभी सर। ओके ओके।
Management of stress meeting techniques. Hello, am I audible, dear friends? Yes, ma'am, you are audible. Okay, so let us start with our next. Okay, are you able to see my screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So yes. So dear friends, now the second part of my lecture, or I'm going to discuss with you, is about the management of stress. As just now we have discussed about, the stress is a main culprit which is playing its role for controlling all our day-to-day life. मॅम थोडं इंटरप्ट करते, आवाज खूप कमी येतोय तुमचा. एकच मिनिट. That's what I was actually adjusting. मी ते ऍडजस्ट करत होते, ते जमतच नाही. एकच मिनिट.
Now am I audible? आता येतोय का? Yes, 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 yes. हा. Okay. Okay. So now we are going to discuss this next part. As we have discussed just now that we have seen that the stress is the main culprit which is playing its role, and it is controlling our life by its way and imparting the effects on us, maybe in the form of the diseases, disorders, or some behavioral changes, or some stressful situations we have to face across. Now, how to get rid of it? As I have told you that through our hobbies, we can somehow get rid of our of the stress, right? But that is not the effective way to get rid of the stress. Yes, it is true that we get some fun out of it, through our hobbies. We can enjoy some very healthy time, very good time, leisure time. Wherever we need, we can keep some, we can spend some time with very healthily. That is a very good advantage of the hobbies which we have cultivated for ourselves. But that is not the way to get rid of the stress which has been playing its role, imparting its role on our body, mind, and mind. Now, what is the antidote on it? इसके ऊपर उपाय क्या है? तो सबसे important solution on it is our breath. Breath is the best remedy to get out of any type of stress. I can tell you that we can very easily come out of the stress, whatever may be the stressful situations, if we can maintain the proper rhythm of our breath. We have to observe our breath cycles day to day, which we do not do at all. We can overcome the stress very easily. This I am giving you very useful insight through this lecture, that breathing, proper सांसें लेना, ये बहुत जरूरी है. The one who takes proper breathing keeps his mind always calm and cool. अभी ऐसे पूछा जाता है, यदि पूछा गया आपको, ये कभी हम अपने खुद से पूछते हैं क्या? Do we ask this question to ourselves? Can anybody unmute yourself and ask and tell me? Do you ask this question to yourself anytime? Have you asked this? Yes, कोई भी आंसर दे सकता है, अनम्यूट करो. Are you happy? Yes, yes. Yes, पक्का. Yes, ma'am. Okay, देखो, हाँ, आप भी happy हो, because you are here with me and attending the lecture, right? But ये questions Yes, हम this question, ये question हमें अक्सर हमें पूछते रहना है खुद को. Am I happy? Am I feeling happy? Am I good? Am I okay? Am I stress free? Right? Yes, sir. Okay. Now the stressful situations which we face causes such type of traumas on our body as well as on our mind, right? Some alarming situations. कभी बहुत बार हम लोग उठते वक्त, when we wake up in the morning, we find that very low feeling, right? And we have to get out of the bed, but we don't feel very good at energy, right? We have to find out the reasons behind it, and that is the trauma, that is the situation that has been arose by the stress on our body only. We can more elaborate the stress as the spelling of the stress.
it includes the words STRESS, right? Now, what is this? This is S stands for sentimental and mind disturbances. T for trauma related disturbances. ट्राउमा से जो कुछ हो जाता है, कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं बहुत बार, काफी ट्राउमास से भी हमें गुजरना पड़ता है. सेंटिमेंटल और माइंड डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं हम लोग, इमोशनल हो जाते हैं. हाँ, फिर R stands for reoccurring and chronic psychological imbalances. ये आजकल क्रॉनिक जो साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस है बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है. बहुत ऐसे बंदे रहते हैं, हम देखते हैं कि जल्दी से गुस्सा होते हैं, जल्दी से कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, कोई भी किसी भी तरीके की एक्ट कर बैठते हैं, उसका ना उसके रेपरकशंस या तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस को कुछ भी माइंड में ना लेते हुए, विदाउट लुकिंग एट द consequences or the whatever disadvantages that has to be faced, ये नहीं, without looking at it कुछ एक्शंस ले बैठते हैं. तो ऐसा ये सब किससे होता है? ये क्रॉनिक साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस से होता है. फिर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी. सोमा मीन्स द बॉडी मैकेनिज्म which gets disturbed, right? So this is all about the stress. And S is again for the severity in the body elements. What is the antidote? इस पे उपाय क्या है? स्ट्रेस, अभी जैसा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ये बॉडी का पार्ट नहीं है. वी accumulated through एक्सटर्नल अफेयर्स, राइट? हम इसको बाहर से एक्यूमुलेट कर रहे हैं बॉडी में. ये कहीं बॉडी का एक पार्ट नहीं है. स्ट्रेस जैसा बॉडी में नहीं बैठा हुआ है, इसको हम ला रहे हैं बाहर से. अब बाहर से ला रहे हैं तो इसको बाहर फेंकने का भी कुछ हमें गिफ्ट मिला गया है. दैट इज द नेचर्स गिफ्ट दैट हैज बीन गिवन टू अस बाय गॉड, एंड दैट इज द ब्रेथ. ये ब्रेथ जो है, इट इज द पावर बिहाइंड ऑल थिंग्स. I breathe in and know that good things will all happen. So ये आज तक किसी ने आपको ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में इतना इम्पोर्टेंस ब्रीदिंग को है ऐसा जरूरी नहीं बताया होगा. लेकिन डियर फ्रेंड्स, दिस इज द गिफ्ट दैट हैज बीन गिवन टू अस बाय द गॉड सिंस फ्रॉम आवर बर्थ. देखो, हम जब माँ की उदर से हम जन्म लेते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू, yes, can anybody tell me by unmuting your mic, what is the first thing which we do after taking the birth? Yes, anybody else? Yes, anybody? कोई बताएगा? अनम्यूट करके बोलिए. क्या मैम? जब हम जन्म लेते हैं, हम बर्थ लेते हैं, तो पहली क्रिया कौन सी करते, क्या करते हैं हम लोग? हम रोते हैं. Why? सांस लेने में तकलीफ होती है. यस, वेरी ट्रू. सांस लेते हैं. सो पहले सांस लेते हैं और वो सांस लेने में, खुद का सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए हम रोते हैं, राइट? तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू इज टू ब्रीथ इन. हम ब्रीथ इन करते हैं. लास्ट में क्या होता है, जब हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी तब क्या होगा? काफी लोगों की तो देखी हुई होगी ना, है ना? तो लास्ट में क्या होगा? यस, एनीबडी? कोई बताएगा? वहां पर भी हाँ, यस. शेवटचा श्वास घेतला जातो. शेवटचा श्वास सोडला जातो, घेतला सोडला नाही, जातो. राईट? सोडला जातो. सो पहिला श्वास आपण जन्मानंतर आत घेतो आणि शेवटला श्वास आपण बाहेर सोडतो. लास्ट व्हॉट वी डू, वी ब्रीथ आउट, बाहेर सोडला जातो. सो इन बिटवीन द ब्रीथ इन अँड ब्रीथ आउट, व्हॉट एव्हर इज लाईंग देअर इज कॉल्ड एज लाईफ. जे काही मध्ये आहे ते म्हणजे आपलं जीवन आहे, आणि जीवन म्हणजेच श्वास आहे, हे आपण समजूनच घेत नाही.
कारण की अजून त्याच्यावर टॅक्स नाही लागलेला ना. ब्रिदिंगवर टॅक्स लागला की मग आपल्याला ब्रिदिंगचं महत्व जाणवायला लागेल. येस ऑर नो? So this is a Yes, part. yes, yes. So jokes apart. So next we are going to discuss about the symptomatic breathing in stress. अभी क्या होता है बेसिकली, जब स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता है ना, जब स्ट्रेस बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है तो शैलो अपर चेस्ट ब्रीदिंग इज अ मेन पार्ट ऑफ टिपिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स. सबसे पहले बॉडी में क्या होता है पता है? हमारा जो ब्रीदिंग होता है ना वो बहुत ऊपर ऊपर का होता है, यानी डीप नहीं होता, वो अपने आप होता है. आपल्या आप होतं की एकदम उथळ उथळ श्वास यायला लागतो. आपल्या छातीच्या अगदी म्हणजे गळ्याच्या पासूनच्या वरच्या भागात पर्यंतच फक्त श्वास असतो. राईट? दिस इज द मेन सिम्पटम. When you find this symptom in your body, know that your body is under stress. Whatever stress is there, you sort it out. The stress response can be reduced consciously breathing using the diaphragm. Now listen, our body, all we know that there is chest part and the abdominal part. In between the two, these two parts has been divided by the मसल डायफ्राम. एक मांसपेशीचा एक पटल असतो छाती आपली आणि उदर याच्यामध्ये. आता बेसिकली ज्यावेळी श्वास आत घेतला जातो तो पोटापर्यंत जात नाही, तर हा डायफ्राम जो मांसपेशीचा पटल असतो, वी कॅन सी द membrane, the muscle membrane in between, which lies in between the stomach and the chest, that is called as a diaphragm. And some pressure, air pressure rises on that diaphragm, and that is why automatically stomach gets bloated up. Right? जर हा डायफ्राम पर्यंत श्वास पोचला नाही तर श्वास वरचेवरच राहतो, आणि श्वास ज्यावेळी वरचेवर राहतो त्यावेळी आपल्या शरीरात कुठं ना कुठं स्ट्रेस त्याचं काम करतो हे समजून घ्यायचं. राईट? तर स्ट्रेस आहे हे समजण्याचे फारच सोपं आपल्याला एक साइन अँड सिम्पटम ईश्वराने देऊन ठेवलेलं आहे, अँड दॅट इज दिस improper pattern of breathing. And this to overcome this, proper breathing practices can reduce the stresses. Right? Abdominal breathing helps to control the nervous system. आता काय होतं नेमकं आतमध्ये जे शरीरात घडतं ते असं घडतं की ज्यावेळी आपण आपलं उदरापर्यंत जे श्वास जातोय असं आपण म्हणतो, ऍक्च्युअली ते जरी तसं नसलं, ऍक्च्युअली इट इज नॉट लाईक दॅट. Only our abdomen gets bloated up due to the pressure that has been arisen upon the diaphragm. हे ज्यावेळी होणार नाही, when this does not happen, there is something changes that has been occurred by the nervous system. But abdominal breathing, when it happens, when you find out that our abdomen comes out or our stomach gets bloated up, when we breathe inside, then that relaxes you, your body gets relaxed, and all the nervous system gets relaxed, all your body organs get relaxed by proper abdominal breathing. This is called as abdominal breathing. What is abdominal breathing? Abdominal breathing is when we breathe in, the abdomen should get bloated up. पोट बाहेर आलं पाहिजे, हे बघायला पाहिजे की आपलं प्रॉपर ब्रीदिंग होत आहे का नाही. जर नसेल होत तर याचा अर्थ आहे आपल्यावर भरपूर स्ट्रेस आलेला आहे. This all findings are as per the State of Victoria Department of Health. Now, what does mean by deep breathing? Deep breathing is one of the best ways to lower the stress in your body. हे मी परत सांगते की डीप ब्रीदिंगला पर्याय नाही. कुठलेही औषधं खाऊन आपला स्ट्रेस दूर होत नाही. ह्युमन बॉडीला स्ट्रेस अक्युमुलेट करायची नॅचरल हॅबिट हल्ली झालेली आहे. Nowadays this has been increasing day by day, आणि ही स्ट्रेसफुल सिच्युएशन आपल्याला
त्यावेळी जाणवते ज्यावेळी कुठल्या एखाद्या संकटाला किंवा कुठल्या एखाद्या ज्यावेळी एखादा कुठला तरी असा अनुभव आपल्याला येतो किंवा एखादी घटना घडते, त्यावेळी आपल्याला आपली बॉडी ज्यावेळी रिस्पॉन्स व्यवस्थित देत नाही त्यावेळी आपल्याला जाणवतं. ऑर समथिंग कुठला तरी एखादा छोटासा आजाराचं निमित्त होतं आणि मोठ्या आजारात रूपांतर होतं. असं ज्यावेळी होतं त्यावेळी ऑलरेडी ती बॉडी खूप स्ट्रेसमध्ये आहे, हे त्याच्यामुळे घडतं. राईट. मग ह्याच्यावर आपण रोज 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 जर आपल्या ब्रिदिंग कडे लक्ष दिलं तर आपण स्ट्रेस फ्री लाईफ सहज जगू शकतो इन स्पाइट ऑफ व्हॉट एव्हर डिफिकल्ट सिच्युएशन दॅट मे अराइज इन युअर लाईफ. कुठल्याही कठीणातले कठीण प्रसंग आयुष्यात आले तरीही डीप ब्रिदिंगच्या साह्याने वी कॅन ओव्हरकम ऑल टाइप्स ऑफ सिच्युएशन्स. व्हॉट इज डीप ब्रिदिंग? सो हे डीप ब्रिदिंग कसं करायचं याचं टेक्निक आहे प्रॉपर. ज्यावेळी आपण ब्रीथ इनहेल करतो म्हणजे श्वास आत घेतो त्यावेळी तो तिथं रोखला गेला पाहिजे. ज्यावेळी श्वास आत रोखला जातो, आत घेतल्यानंतर रोखला जातो, त्यावेळी आतमध्ये अनेक चांगले बायोकेमिकल चेंजेस घडतात. आणि तो तिथे ज्यावेळी रोखून ठेवला जातो, आत घेऊन रोखून ठेवल्यानंतर जे हॅपी हार्मोन्स आहेत ते स्रवायला खूप जास्त मदत होते. आणि त्यानंतर ज्यावेळी तो एक्झेल केला जातो, आफ्टर होल्डिंग इट इनसाइड फॉर 4 सेकंड, व्हेन यू एक्झेल इट आउट फॉर फर्दर 4 सेकंड्स, अगदी सावकाश तुम्ही जास्तीत जास्त सावकाशरित्या श्वास बाहेर सोडतात, त्यावेळी संपूर्ण टॉक्झिन्स सकट श्वास आपले टॉक्झिन्स बाहेर घेऊन श्वास बाहेर पडतो and the body gets relaxed. And this is because when you deep breathe, it sends a message to your brain to calm down and relax. The brain then sends the message to your body. हे सगळं एवढं घडतं की ब्रेन कडून आपल्या बॉडीला मेसेज येतो की नाउ यू आर इन रिलॅक्स स्टेट. राईट. So all the science that lies behind the management of stress in deep breathing. वर बघायला डीप ब्रीथिंग हे खूप सोपं आहे. ऍज यू सी दॅट यू से मॅडम काय सोपं सांगितलं तुम्ही, बट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कल्टिवेट द हॅबिट टू मेंटेन युअर प्रॉपर ब्रीथिंग पॅटर्न. आवर ब्रेथ when we have come into the on this earth that has a proper natural breathing pattern. One rhythm was there and that rhythm we have lost out. आपल्या नकळत हा रिदम आपल्या श्वासावरचा निघून गेलेला आहे. मे बी आजारपणा असू देत, सर्जरीज असू देत, लहानाचे मोठे आपण झालो तेव्हा अनेक वाईट सवयी घेऊन जडलेलो असू देत, आपल्या स्वभावाचे काही पैलू असू देत, व्हॉट एव्हर इट इज, ह्याच्यामुळे आपल्या ब्रीदिंग पॅटर्नवर खूप सारा इफेक्ट झालेला आहे ऑलरेडी, विच कॅन बी रिकवर्ड अप. त्याला आपल्याला परत आपल्या नॅचरल ब्रीदिंग पॅटर्न मध्ये रिदम मध्ये आणता येतं. राईट. मग कसं, तर हे आता आपण बघितलं. एकतर लॉंग एक्झेल करायचं, ॲब्डॉमिनल ब्रीदिंग करायचं, उदर श्वसन ज्याला मराठीत म्हणतात ते करायचं. ब्रेथ फोकस म्हणजे आपल्या ब्रेथवर आपण फोकस ठेवायचा, आपल्या ब्रेथवर सारखं लक्ष ठेवायचं. इक्वल ब्रेथ झाले पाहिजे, कुठे कधी धडपडीत घाई गडबडीत ब्रीदिंग व्हायला नको. रेझोनंट ब्रीदिंग झाले पाहिजे. अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग प्रॅक्टिसेस आपण केल्या पाहिजे. राईट. मग एवढं सगळं सतत करण्यापेक्षा एकच मोस्ट पॉप्युलर टेक्निक आहे अवेलेबल, दॅट इज कॉल्ड एज द सुदर्शन क्रिया. इट इज अ वर्ल्ड वाइड accepted natural rhythmic breathing technique which imparts a natural rhythm. After doing it, it imparts a natural rhythm on our body and it gives a natural rhythm to our breath, and hence it releases out all types of the stress in your body. It has been found out that the people who practice this Sudarshan Kriya daily, their cortisol level has been studied for after 45 days of regular practices, that has been come down to 0, and that is the ideal situation, that cortisol level should always be maintained at 0, minimized levels in body, so that cortisol should not play by creating the stress and other some
culprits in your body. Now, Carrie Mayer says that you work out to improve your cardiovascular fitness, muscular strength, and endurance and flexibility. You train your clients and students for same reasons also. But have you forgotten to breathe? एकदा बघा तर जरा. You just find out that. हे तर सगळं आपण करतो. आपल्याला जिम मध्ये जायला आवडतं. आपल्याला मसल फिटनेस बनवायला आवडतं. आपल्याला कार्डिओव्हास्क्युलर जिम करायला आवडते. फ्लेक्झिबिलिटी ठेवायला आवडते, राईट. आपण जिमिंग करण्यासाठी आपल्या विद्यार्थ्यांना पण आपण प्रवृत्त करतो, राईट. हे वाईट नाही आहे, दिस इज नॉट गुड, बट याच्या सोबत दिस इज नॉट बॅड, बट ह्याच्या सोबतच आपल्याला हे बघायला पाहिजे की वेदर अवर ब्रीदिंग इज प्रॉपरली गोइंग ऑर नॉट. नाउ it seems very easy to observe, but it is very difficult to practice, right? So by learning to control your breathing, by understanding how the respiratory system is integrated with your body, by using conscious breathing in all your pursuits, you will improve nearly every aspect of your life. This is been explained by Al E, co-author of Perfect Breathing, published by Sterling Publishing. And the same conclusion has been concluded by the founder of Art of Living International Foundation by Sri Ravi Shankar in India. Now the stress releasing and breathing. Breathing is a natural instinct. आता breathing मी जसं म्हणते की हे ग्रेटेस्ट गिफ्ट आहे, हा फार मोठी मौल्यवान देणगी ईश्वराने आपल्या जवळ देऊन ठेवलेली आहे, जिचा आपण उपयोगच करायला विसरलेलो आहोत. It is a greatest gift given by us to God, to us by God, that is from divine to the mankind. First breath was inhalation, while last breath will be the exhalation. Breath is the life only. Now the researchers says that 30% of our lung capacity is only been utilized throughout our life, and it does mean that, in other words, 70% of the lungs we are giving back to God without using it, right? 70% lung capacity आपण unused करून परत करणार आहोत ईश्वराला. 90% of toxins are being removed through proper breathing. As CO2 gets released out, कार्बन डायऑक्साइड आपल्याला सगळ्यांना माहिती, लहानपणापासून शिकलोय. कार्बन डायऑक्साइड हा बाहेर फेकला जातो श्वासाच्या माध्यमातून. तर असं म्हटलं जातं की रिसर्चर्स सांगतात की 90% जे टॉक्झिन्स आपल्या विषारी द्रव्य आपल्या शरीरात साठले जातात ते प्रॉपर ब्रीथिंगच्या माध्यमातून बाहेर फेकले जातात. 8% हे आपल्या स्वेटिंग अँड घामांच्या इंद्रियांद्वारे, घर्मेंद्रियांद्वारे फेकले जातात. तर ओनली 2% टॉक्झिन्स आर थ्रोन आउट अवर ह्युमन बॉडी थ्रू द एक्सपिरेटरी सिस्टम. टू इन्क्रीज दिस कॅपॅसिटी ऑफ लंग्स, आता 30% आपल्याला अजून 100% कडे जर न्यायचं असेल तर आपल्याला दररोज अशा काही ब्रेथच्या प्रक्रिया केल्या पाहिजे की जेणेकरून आपले लंग्स हे स्ट्रॉंग झाले पाहिजे. जर आपण ब्रीदिंग प्रॉपर नीट लक्ष दिलं तरच लंग कॅपॅसिटी ही इम्प्रूव्ह होणार आहे, राईट. To increase this capacity, daily breathing exercises should become a part and parcel of our lifestyle. Breath forms a powerful bridge between body and mind. This is again very important, as we are discussing from my first lecture that the 70 to 75% diseases are psychosomatic diseases. That means both body as well as mind has been involved in all illnesses. All sort of illnesses involves both body and the mind. दोन्ही इन्व्हॉल्व होत आहे. मग या दोन्हीच्या मधला जो दुवा आहे, या दोन्हीला कंट्रोल करणारा बॉडी आणि आपलं मन, आपलं शरीर आणि आपलं मन यांना जो कंट्रोल करणारा दुवा आहे तो म्हणजे आपला श्वास आहे. सो breath forms a powerful bridge between the body and mind. Hence we can be easily come out of all sort of psychosomatic diseases if we practice proper breathing daily. Now, all of you know that, some of you might be knowing, but many of you must not be known through it, must not have gone through it. When we come as
on this earth as a human being, when we take the earth, ज्यावेळी आपण जन्माला येतो एक व्यक्ती म्हणून, त्यावेळी आपल्या अस्तित्वाचे 7 लेवल असतात. We come with body, breath, mind, memory, intellect, ego and self. काय काय बरं? शरीर, श्वास, मन, चित्त, बुद्धी, अहंकार आणि आत्मा, या सगळ्यांच्या सोबत आपण एक मानवी जन्माला येतो. हम ये सातों स्तरों के साथ एक ह्यूमन बीइंग करके हम इस धरती पे बरत लेते हैं. तो हमको लगता है ओनली वी हैव बॉडी, हमारा सब जो कंसंट्रेशन होता है ओनली वी लुक आफ्टर आवर बॉडी. हमारा बॉडी ठीक रहना चाहिए, हमारा बॉडी में कुछ इलनेस नहीं आना चाहिए, हमारा बॉडी स्ट्रांग रहना चाहिए, राइट? वी नेवर गो ऑल दिस 7 लेवल अप टू दिस 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस. ये सातों की ओर कौन ध्यान देगा? ब्रेथ कैसा प्रॉपर चलेगा? माइंड कैसे प्रॉपर चलेगा? मन हमारा हमेशा खुश कैसा रहेगा? स्ट्रेस फ्री कैसा रहेगा? मेमोरी हमारा जो कुछ भी है, मेमोरी जो स्मृति में हम संजो कर रखते हैं, जो पुरानी बातें, उससे फ्री कैसा होगा? इंटेलेक्ट हमारा शुद्ध कैसा होगा? ईगो हमारा स्ट्रेस फ्री कैसा होगा? हम कैसे हमारे खुद के साथ फ्रेंडली रह सकेंगे? ये सारी बातें मिलके हमारा एग्जिस्टन्स होता है ऍज अ ह्युमन बीइंग, राईट? आम्ही फक्त शरीराकडे बघतो. मला चांगलं खाऊ देत, मला चांगलं मिळू देत, मला सुकामेवा मिळू देत, मला चांगली औषधं मिळू देत, का तर शरीर स्ट्रॉंग ठेवायचं असतं. बट आम्ही हे सगळे श्वास, मन, चित्त, बुद्धी, अहंकार आणि आत्मा यांचा विचारच करत नाही. Mom, excuse me. Yes. The previous sentence or content was not understandable. Okay. Can you please repeat Yeah, it? sure. See, when we come on this earth as a human being, right? When we take birth on this earth as a human being, we come with all these 7 levels of existence. ये हमारी existence की 7 level होती है. These are all 7 levels of existence of us to exist as human being. एक मनुष्य होने के नाते हम ये सातों के साथ आते हैं. But what we do, we just concentrate on our body only. We just look after our body. We always think on our body. We feel some pains in our body, and just we take care of only body. We never take care of our breathing. We never take care of our mind. We never take care of memory. We never go through, find out what are the illnesses in my intellect. When we never look at our ego, what type of ego I possess. We never go towards ourselves. We never meet ourselves properly. What is this self? Self is me, myself, right? We can never meet. If we go all through all 7 levels of existence, then only we can meet ourselves as a very good and kind and best person in this universe. To be a friend of ourselves, we have to go through all these 7 levels of existence, and we have to study ourselves. What are these? Right? And if you see this body, if you look after the body, all these 7 levels of existence, we see that we can feel only our body, right? हम हमारे शरीर को जान सकते हैं, कुछ हम रिफ्लेक्स सेक्शन से जान सकते हैं, कुछ लग गया, कुछ भी जो कुछ है वो हम सब शरीर को ही जानते हैं. हाँ, लेकिन हमें ब्रीदिंग का कब पता चलता है? जब कुछ अनचाही घटना घट जाती है, तब हमारा ब्रीदिंग बहुत स्लो, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है. और या तो फिर हमें कुछ पकड़ना है, बहुत दौड़ रहे हैं, जब हमें बहुत ऐसी धाप लगती है, हम when palpitation starts, then we see that our breathing is there, right? तब तक के हम लोग हमारे ब्रीदिंग को देखना ही नहीं चाहते. Now here this body, we know we have the body. When we are here as a human being, we have body, right? We can see our body, but do we see? We can feel this breath, but can
Can we see our mind? Can we see our memory? Can we see our intellect? Can we see our ego? Can we see our self by eyes? Through eyes? No, we cannot. So these all from this third level, that is mind, memory, intellect, ego and self. These are unseen world of ourself. ये अदृश्य जो हमारे हम एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, हमारे साथ आया हुआ है, लेकिन हम देख नहीं पाते, इसको जान नहीं पाते, राइट? तो ये अदृश्य है, इसको हम देख सकते हैं बॉडी को। तो जो दृश्य दुनिया है और जो अदृश्य दुनिया है जो हमारे साथ है, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो ब्रीदिंग कर रहा है। ये जो तीन 4 5 6 7 जो है, माइंड, मेमोरी, इंटेलेक्ट, ईगो एंड सेल्फ, दे फॉर्म अंत चतुष्टय, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं ना, अंतरात्मा, अंतःकरण, मेरा अंतःकरण, मैं अंतःकरण से बात करता हूँ। तो ये सबका बना है, ये माइंड का बना है, मेमोरी का, इंटेलेक्ट, माइंड प्लस मेमोरी प्लस इंटेलेक्ट प्लस ईगो प्लस सेल्फ, दिस फॉर्म्स अपना हमारा अंतःकरण। माइंड inner world is formed by all these 3 4 5 6 and 7, and the body is easily seen by us. It means that the unseen world of us and seen world of us is being controlled by breath. Are you getting my point? The breath is an important separate level of existence that forms a bridge between the seen world of the human existence and unseen world of the human existence. Mind composes of storage of emotions, thoughts. We are coming across the what is mind hereafter. लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सातों स्तर हमारे साथ आए हुए हैं और हम खुद सिर्फ ओनली बॉडी, हमारे शरीर की ओर ध्यान दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। ये साथ बाकी के ऑल 6 लेवल्स हमको स्टडी करना पॉसिबल होना चाहिए, राइट? नाउ अभी we will come again towards breathing. Every incoming breath, all of we know it supplies oxygen to every cell of your body. अब ये तो सभी को पता है कि जो ये सृष्टि में जितनी भी जिंदा चीजें हैं, चाहे वो फूल पत्ती हो, पेड़ हो, एनिमल्स हो, हम ह्यूमन बीइंग हो, या सेल्स टिश्यूज हो, या और जितना भी जिंदा बैक्टीरियाज हो, वायरसेस हो, इन सभी को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, isn't it? और हमारे जो शरीर बना हुआ है वो क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ सेल्स से बना हुआ है। एवरी सेल नीड्स ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हम इनहेलिंग यानी ब्रीदिंग से ही, हमारे दूसरा कोई चारा ही नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन हमारे ब्रीदिंग से ही हमारे सेल, हर एक सेल तक जाने वाला है, राइट? ये हमें पता होने के बावजूद भी हम ब्रीदिंग की ओर प्रॉपर ध्यान नहीं देते। ये सबसे बड़ी शोकांतिका है। Every incoming breath, it supplies oxygen to every cell of your body and it energizes. Now, whatever body mechanism, I am myself being a chemist, I can tell you confidently that every cell reaction needs oxygen. Every reaction, biochemical reaction that is taking part in our body needs oxygen. Without oxygen, सारा कुछ ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो ऑक्सीजन को प्रॉपरली हर एक एलिमेंट के साथ कंबाइन होना बहुत जरूरी है, तभी हर एक सेल, हमारी हर एक पेशी, हमारा हर एक ऑर्गन प्रॉपरली वर्क कर पाएगा, राइट? सो ऑक्सीजन, breathing only supplies oxygen to every cell of our body. Still we are not giving importance to breathing. And ये जब ऑक्सीजन हमें अच्छे से मिलता है, देखो हम लोग काफी बार जैसे बाहर घूमने निकल जाते हैं, खुली हवा चलते रहती है, वी फील वेरी एनर्जेटिक, बहुत अच्छा लगता है, वो हम लोग बहुत एकदम हल्के फुल्के हो जाते हैं, खुशी महसूस होती है। ये क्यों होता है? बिकॉज आवर बॉडी गेट्स एनर्जी। हाउ कम? ये सिर्फ खाने से नहीं आता है एनर्जी, तो ये ब्रीथिंग के थ्रू हमारा ऑक्सीजन हर एक सेल की ओर जा रहा है। एवरी सेल is becoming very happy through oxygen.
हमारे सेल को न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स के साथ साथ ऑक्सीजन की इक्वली जरूरत है। यदि ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो चेन रिएक्शन होके टिश्यूज की अनकंट्रोल ग्रोथ होके कैंसर फॉर्म होता है। कैंसर का मेन रीजन ही चेन रिएक्शन इनिशिएशन है। ऑक्सीजन का इंटेक एंड ऑक्सीजन का पूरा मेटाबॉलिज्म इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, which is being very much neglected by human being nowadays. While every outgoing breath relaxes our body, जब जो बॉडी के बाहर जाने वाला ब्रेथ होता है, inhaling and out exhaling is simultaneously going on throughout 24/7, right? तो ये जब बाहर निकलता है, सांस जब बाहर छूटती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा उतना हमें रिलैक्सिंग फील होगा। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो ये अदर कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। ऑल सच टाइप ऑफ 90% of toxins are released through our body by the proper breathing technique. Of course, such breath should also be stress free. यदि ब्रीदिंग हमारा ऊपर के ऊपर ही रह रहा है, चेस्ट तक, चेस्ट से नीचे जा ही नहीं रहा है, तो हमारा ब्रीथ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, ये जान लेना है, राइट? नाउ a normal person inhales about 10 liters of air daily. Can you imagine this? इतना हवा हम 10 लीटर का हवा हमारे लंग्स से जा रहा है अंदर। To stay stress free forever, it is important to live in the present moment. जब तक हम present moment में नहीं रहते, यहाँ हम हैं तो खुश है, जब हम यहाँ हैं तो खुश है, बस इस मोमेंट में खुश है। आगे वाला मोमेंट क्या आएगा पता नहीं। जब भी हमको स्ट्रेस फ्री रहना है तो इसका भी प्रैक्टिस, ये हैप्पीनेस का प्रैक्टिस हमें करना होगा। मैं यहाँ हूँ, मौजूद हूँ, I am here, I am present over here, yes I am in the present moment, I am stress free. Whenever you look to yourself into the present moment and you find yourself in the present moment, you will feel very happy. Do practice for it. And proper breathing automatically brings you in present moment. ये बहुत सुंदर साइकिल है, right? But in regular practice, 100% use of lungs is never done by human beings. This should be very important to note hereafter. यही हमने बताया परफॉर्मेंस ब्रीदिंग कैसा होता है, बेनिफिट्स उसके क्या होते हैं, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, राइट? नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग प्रॉपर ब्रीदिंग। जब देखो हमने कहा कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती है जो फाइट एंड फ्लाइट की होती है, तब कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, ये सब एपिनेफ्रिन, ये सब हमारे बॉडी में सीक्रेट होने लगता है और बहुत ज्यादा कल्प्रिट है, हमारे बहुत शत्रु है स्ट्रेस हार्मोन्स। तो अपोजिट टू दैट, जब हम रिलैक्स रहते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स भी हमारे बॉडी में सीक्रेट होना चालू होता है, राइट? जब हम हैप्पी होते हैं, जब हमारी ब्रीथिंग प्रॉपर होती है, स्ट्रेस फ्री होती है, तब ड्यूरिंग सच रिलैक्स एंड काम स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पी हार्मोन्स आल्सो गेट सीक्रेटेड इन आवर बॉडी। नाउ व्हाट आर these? Endorphins, dopamine, serotonin, oxytocin, all these are the happy hormones. Now endorphins, what are they are responsible for? Endorphins are responsible for laughter and exercising. हमें एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं हो रहा है तो जान लेना कि एंडोर्फिन सीक्रेट ठीक से नहीं हो रहा है। एक्सरसाइज, लाफिंग जो होता है, लाफ्टर के लिए, ह्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो दैट इज एंडोर्फिन। हाँ, फिर डोपामिन, देखो डोपामिन के तो रोल्स इतने ज्यादा है कि इतना बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है डोपामिन हमारी बॉडी में। हमारे सारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारी हार्ट की सारा मेंटेनेंस, लंग्स का मेंटेनेंस, एब्डोमिनल एंड आवर ब्रेन मेंटेनेंस, ये सभी काम डोपामिन के ओर दिए गए हैं सृष्टि में। तो डोपामिन यदि ठीक से सीक्रेट नहीं होता है तो हमें ये सारों से हमको सारे इलनेस को फेस करना होगा। ये कब होता है, कब सीक्रेट होता है? डू यू नो? ड्यूरिंग अप्रिसिएशन और
at workplace or at home or in any time in the society. जब भी कभी मौका मिले लोगों को अप्रिशिएट करते जाओ, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। आपको कुछ भी अच्छा लगे या कुछ ना लगे, गो ऑन अप्रिशिएट, कल्टिवेट द हैबिट ऑफ एप्रिसिएशन। सभी को अप्रिशिएट करो, मुंह पे अप्रिशिएट करो। ये हैबिट कल्टिवेट करते हो तो डोपामिन बहुत सीक्रेट होगा। ये बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स हम आज आपको दे रहे हैं, राइट। दूसरा है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन सिक्रेशन इज एसोसिएटेड विथ वैलर। जब कभी कोई वैलर की बात चलती है, ये करके दिखाना है, चैलेंजेस लेना है, हाँ, तो चैलेंजेस यदि नहीं लेने का मन कर रहा है तो इसका मतलब है सीरोटोनिन गायब हो गया शरीर से। तो चैलेंजेस को ओवरकम करना है, कुछ हार्ड सिचुएशंस को हमको गो थ्रू करना है, या तो फिर हमें कोई बहुत डिफिकल्ट प्रैक्टिसेस करनी है, तो ये सब जब हम करते हैं तब हमारा सीरोटोनिन सिक्रेशन प्रॉपर बॉडी में होना चाहिए। If it is not there, if we are lack of valor, it does mean that serotonin levels are not good in our body. इसके बाद का चौथा हमारा जो दोस्त हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन, वो है ऑक्सीटोसिन। जब कभी हम हग करते हैं, हमारे बच्चे पास में आते हैं, हमारे पेट्स पास में आते हैं, कैसे फील करते हैं हम लोग? बहुत हैप्पी फील करते हैं, isn't it? At that time oxytocin gets secreted in our body. ये जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, ये बरकरार रखने के लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा, राइट। ये ऑक्सीटोसिन लेवल को मेंटेन करना होगा, राइट। ये हार्मोन कब सीक्रेट होता है? जब हमें ममत्व की भावनाएं हमारे मन में पैदा होती है, राइट। ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन्स, ऑल आर हैप्पी हार्मोन्स एंड दे मेंटेन आवर हैप्पीनेस, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। ये सिर्फ खाने से नहीं होगा। कोई भी कुछ अच्छा फूड खाएंगे तो ही हमारा स्टेट ऑफ माइंड अच्छा होगा। सी ऑल द थिंग्स व्हाटएवर वी बाय ना, दैट गिव्स अस कंफर्ट बट नॉट हैप्पीनेस। हम लोग बहुत सारे फ्लैट लेके रखते हैं, प्लॉट लेके रखते हैं, हम काफी सारे कंफर्ट की बातें, एसी बैठाते घर लगाते, घर में काफी सारे गाड़ी लगती, हमें व्हीकल्स लगते हैं, ये काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक ये लगते हैं, गैजेट्स हमें घर में लगते हैं। ये सब ऑल दीज थिंग्स गिव्स अस कंफर्ट बट नॉट हैप्पीनेस। कंफर्ट एंड हैप्पीनेस आर डिफरेंट टर्म्स। हैप्पीनेस depends upon the level of what is the level of happy hormones in your body, right? Now what is the definition of a healthy person according to who? जैसा कोविड के बाद में WHO पे बहुत सारी जवाबदारियां थी, ऑल वी नो, तभी उसी दौरान बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए और हेल्दी पर्सन की भी डेफिनेशन चेंज हो गई। So according to who, the recent definition according to who is a healthy person is the one whose body is disease free, whose breath is stress free, whose mind is in the present moment or in the aware state, whose memory is not associated to past. That is the past memories which gives us sorrow, present moment gives us happiness with natural rhythm of breath, future thoughts brings us worries, right? Intellect is prejudice free. Ego is not stiff and stuck in I, me, mine, self only. And when your soul is free from sorrows. ये सातों जब ये सारों चीजों से दूर होते हैं तभी एक पर्सन को हेल्दी पर्सन कहा गया है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए हेल्दी पर्सन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आई एम रिपीटिंग इट, whose body is disease free, जिसके शरीर में कोई रोग नहीं है, whose breath is stress free, along with body के साथ ही ब्रेथ पे कोई स्ट्रेस नहीं है, पूरा ब्रेथ एब्डोमेन तक जा रहा है, आ रहा है, बिल्कुल हल्का रिदमेटिक ब्रीथिंग अच्छे से हो रहा है। वैसे ही जिसका मन प्रेजेंट मोमेंट में है और कॉन्स्टेंटली अवेयर है, वैसे उसके साथ ही मेमोरी पास्ट से, हमारे भूतकाल से एसोसिएटेड नहीं है,
बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में है और फ्यूचर से भी एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि फ्यूचर हमें हमेशा वरीज देता है, चिंताएं देता है। पास्ट मेमोरीज भूतकाल हमें बहुत ग्रीवेंसेस देता है, सौरो देता है। तो मेमोरी हमारी प्रेजेंट से एसोसिएटेड है, अभी क्या हुआ है इससे एसोसिएटेड है। वैसे ही हमारा इंटेलेक्ट प्रिजुडिस फ्री है, किसी को जज नहीं कर रहा है हमारा इंटेलेक्ट। हमारा इंटेलेक्ट हमेशा किसी को जजमेंट के लिए बिजी रहता है। तो ये हेल्थी पर्सन का लक्षण नहीं है। इंटेलेक्ट शुड ऑलवेज बी प्रिजुडिस फ्री। ईगो शुड नॉट बी स्टिफ एंड स्टक। ईगो ये जब मैं मेरा और सेल्फ से मैं मेरे और देखूं, मेरा ही देखूं, मेरे लिए ही देखूं, मेरे साथ ही होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, जब तक मैं मेरा होगा तब तक ये ईगो बहुत स्टिफ होगा एंड इट विल बी ऑलवेज बी स्टक इन विद मी ओनली। तब ये पर्सन का, हेल्दी पर्सन का लक्षण नहीं होगा। एंड जब ये हमारा सोल सारे दुखों से बाहर और मुक्त होगा, चैतन्य स्फूर्तिदल होगा, हेल्दी हैप्पी फीलिंग होगा, तब कहीं जाके एक पर्सन पूरा हेल्दी पर्सन कहलाया जाएगा। अभी हमें ये होमवर्क करना होगा आज के इस सेशन के बाद, वेदर वी हैव टू फाइंड आउट वेदर वी आर फिट, वी कीप आवरसेल्फ इन दिस डेफिनेशन, recent definition of World Health Organization or not। जल्दी से देख लेते हैं अभी ये क्या है, माइंड क्या है। तो माइंड इज वेरी डिफिकल्ट। देखो हमने अपना कम में मन नहीं देखा हुआ है ना, ये देखने वाली चीज नहीं है, दिखती नहीं है, मन है ऐसा, है ना। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है हैंडल, इमोशंस हैंडल करने के लिए। तो ऐसा ट्रेन भी नहीं कर सकते कि मेरे मन को मैं हमेशा देखते रहूं, पगला जाएंगे, है ना। यानी बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट इजी to see our mind always and train our mind to look at ourselves, right? We can change these by changing the breathing pattern and bringing our breath in the natural rhythm। ये पैटर्न जब कब चेंज होगा, हमारी जो माइंड के जो ये जो हमारे जो क्या कहेंगे सीक्वेंसेस है, ये जो माइंड की हमारी ट्रिमर्स है, हमारे माइंड का जो कुछ भी हमारे हम कहेंगे कि जो कुछ भी शेकिंग अप हो रहा है माइंड में, ये चेंज करने के लिए हमारा ब्रीदिंग पैटर्न जो नेचुरल रिदम में लाना है, हमें ये ब्रीदिंग पैटर्न हमें चेंज करना होगा। We have to work on our breathing pattern strictly। It is only breath which can help us reducing and eliminating the stress। There is a strong connection between breath and mind। Mind always remain entangled in past and future। हमारा माइंड ऐसा पेंडुलम जैसा होता है, देखिए ना आपने, ऐसा पेंडुलम जैसा होता है, कभी अभी भूतकाल में जाता है तो इमीडिएटली वो फ्यूचर में चला जाता है। अब कभी ये इसके बीच में वो गोते खाते रहता है। कल में क्या हुआ था, ऐसा हुआ था क्या, अच्छा देखता हूँ, अभी मैं देखती हूँ इसको, अच्छा उस दिन ऐसा हुआ था क्या, ओके, अरे नहीं तो फिर कल की टुमारो की सोचते रहता है कि अच्छा मुझे कल क्या पढ़ाना है, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करना है, या आप कुछ पास्ट से, बीती हुए पास्ट से कुछ सीखना नहीं है, ऐसा नहीं है। वी हैव टू टेक द लेसन्स फ्रॉम द पास्ट, व्हाटएवर पास्ट वी हैव कम अक्रॉस, एंड वी हैव टू प्लान फर्दर फॉर अवर फ्यूचर प्लान्स फॉर नेक्स्ट 5 years। कमिंग 5 years के लिए हमारा फ्यूचर प्लान होना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन हमें उसमें रहना नहीं है, हमको वहां पे खुद को स्टिक करके नहीं रहना है, नाइदर इन फ्यूचर नॉर इन पास्ट। जब जिंदगी जीना है तो ये अब भी इस क्षण में जीना है, अब भी। क्यों, व्हाई? बिकॉज दिस इज स्ट्रेस फ्री मोमेंट। अब भी ये बहुत मजा आ रहा है, खुशी है, इस मोमेंट में खुशी है। जब हम स्टडी करेंगे तब भी कहीं जाके हम हैप्पीनेस का प्रैक्टिस, हैप्पीनेस की कल्ट को कल्टिवेट कर पाएंगे, राइट। और हैप्पीनेस इज द मैटर ऑफ कल्टिवेटिंग। इसको हमको प्रैक्टिस करना होगा, रोज रोज प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस की बात है हैप्पीनेस, हाँ, हैप्पीनेस कल्टिवेट करना। फिर माइंड ऑलवेज रिमेन्ड एंटेंगल्ड इन पास्ट एंड फ्यूचर। इन आवर चाइल्डहुड डेज वी वर इन द प्रेजेंट मोमेंट ओनली। हम बहुत खुश थे बचपन में, क्योंकि we used to stay in present moment only, right? 90% of nutrition is supplied by breath to the body।
हम लोग खाते हैं, जो रोज का खाना खाते हैं वो बहुत कम हमारे बॉडी पे इफेक्ट करता है। प्रॉपर ब्रीदिंग एंड प्रॉपर फूड सप्लीमेंट्स ये यदि है तो हमारा बॉडी पूरा, हमारा बॉडी माइंड ब्रेथ सब कुछ स्ट्रेस फ्री रहेगा। एयर इनटेक 10,000 लीटर है। ब्रेथ इज वाइटल फॉर लाइफ। हाँ, यदि ब्रेथ नहीं है तो जब ब्रेथ निकल जाता है तो हम क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ब्रेथ छूट गया, सिर्फ बॉडी रहती है, राइट। ब्रेथ के आगे के सारे जो है वो निकल जाते हैं, वो सिर्फ बॉडी, हम कहते हैं बॉडी उठा लो, isn't it? That is the dead, that is death state. जब ब्रेथ निकल जाता है, because breath is only life. हाँ, so we should try to understand this. इमोशंस क्या होती है, देखो बचपन में कहीं पे भी ऐसा नहीं सिखाया जाता है, वो कुछ बातें सिखाई जाती है लेकिन इमोशंस को हैंडल करना कैसा है ये नहीं सिखाया जाता। दिस इज वेरी I can say a great sorrow of our education system, that except handling emotions and feeling, everything is being taught over here. It is taught nowhere. Mind, emotions and thoughts comprises our inner world of our existence. इसको हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, हमारा अंतःकरण कहते हैं। We never learn to handle and manage. हम इसको मैनेज करना सीखते नहीं, हैंडल करना नहीं सीख पाते। तो इसको हैंडल जब करना है तो नेचुरल रिदमिक ब्रीदिंग ओनली कैन हैंडल ऑल दिस। Intellect, our intellect always keep itself stacked into prejudice if stress is there. जब stressful intellect होती है तो present moment में रह ही नहीं पाती, वो हमेशा किसी ना किसी के बारे में सोचते रहती है, इसका ऐसा है, उसका वैसा है, इसका नेचर, अदर पर्सन। एंड जो पॉजिटिव थिंग्स होती है ना उसी पे जज करती है, उसी को जज करती है, ऐसी ऐसा में अटका हुआ है, वो पॉजिटिव थिंग्स पे डाउट करता है। हाँ, अभी जैसे कोई कहता है how can I be a good person for him? Why he has said me? Why she has said me like this? Right? Immediately we start questioning ourselves. Stress-free memory should be free of prejudice, doubts, and thoughts should have clarity at all. ये थॉट्स में क्लैरिटी लाना है तो प्रॉपर रिदमिक ब्रीदिंग बहुत बहुत जरूरी है। फिर लास्टली वी कम टू द मेमोरी। वी ऑलवेज मेमोराइज नेगेटिव थिंग्स, दैट यदि कुछ 10 कोई निगेटिव बातें होती है, कुछ 10 ऐसी बातें होती है जिसमें 10 ऐसी बातें होती है जिसमें 8 बातें पॉजिटिव हो रही है और 2 बातें निगेटिव हो रही है, तो हमारा माइंड ये 8 पॉजिटिव की ओर नहीं कंसंट्रेट होता, हमारा माइंड, हमारी मेमोरी वो 2 को पकड़ के बैठती है कि ये ऐसा मेरे साथ हुआ ही क्यों, राइट। और उसको पकड़ के हम वो जो 8 जो पॉजिटिव होते हैं ना, यही टाइप ऑफ लाइफस्टाइल हम लोग जी। एज वी ऑल वी नो 80% ऑफ वी happiness we have in our life and 20% sorrows each and everyone has to face it. But what we do, instead of making it as 80% positive, what we are making is 120% sorrows we are bringing through our negative emotions and negative thinking to our life, right? 10 यही हमने अभी बताया, 10 good things done by anyone are not memorized at all, but one wrong thing will always be memorized. ये करना है तो ब्रीदिंग पे ध्यान होना होगा। such type of, because such
type of memory is always a memory. Right? Ego elimination, ego, EGO, this for elimination of easiness, for gathering of wrong impressions about self. O is for organizing self difficulties. We get caught up in limited identity due to stress ego. हमारी आइडेंटिटीज को पकड़ के हम इतना ज्यादा कॉट अप हो जाते हैं और वो हमें नहीं पता रहता कि ये बहुत लिमिटेड है. यदि हम हमको खुद को डिस्क्राइब करने लगे तो वर्ड्स खत्म हो जाते बहुत जल्दी. विद इन 5 मिनट्स वी कैन, हमारे जो वर्ड्स है, मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं ये हूँ, वो ही, यही हूँ, यही हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, करते 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 विद इन 5 मिनट्स ये लिमिटेड आइडेंटिटीज होती है. हमको भगवान ने लिमिटेड आइडेंटिटीज में नहीं रहने के लिए सिखाया है. हमारी आइडेंटिटीज, ये हमारी पावर, हमारा स्ट्रेंथ, हमारी जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ एनॉर्मस है. काफी कुछ हम हासिल कर सकते हैं if we come out of the struck ego. यदि स्टेप ये मेरा, मैं, मेरा खुद में, ये यदि इससे छुटकारा पाके यदि हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे ये पूरे एनवायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं जहाँ रह रहा हूँ आजू बाजू के एनवायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ये मेरा है, ये इलाका मेरा है, ये एरिया मेरा है, ये शहर मेरा है, ये स्टेट मेरा है, ये कॉलेज मेरा है, ये यूनिवर्सिटी मेरी है. जब ये मेरा, ये जब बिलोंगिंगनेस बढ़ते 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 जाता है तब ईगो अपने आप रहता कहाँ है. तो ईगो से छुटकारा पाने के लिए ईगो रहने दीजिए, थोड़ा ईगो रहना भी हमें पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है. थोड़ा ईगो रहना भी चाहिए, दैट इज गुड फॉर आवर सेल्फ, बट बियॉन्ड आवर कंट्रोल. जब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे सोसाइटी, हेलो. या मैम बोलिए. सर आवाज ही नहीं आ रही. आई थिंक हमारा कुछ कनेक्शन छूट गया था. हाँ, यस मैम. ओके. तो ये ईगो हम इससे आसानी से बाहर आ सकते हैं. इस पे भी हमें ब्रीदिंग ही हेल्प करेगा. जब हम सहजता से, हमारा ब्रीदिंग यदि स्ट्रेस फ्री है तो वी कैन विथ इजीली सभी के साथ कम्युनिकेट तो कर पाएंगे. एटलीस्ट हम लोग कम्युनिकेट भी ठीक से नहीं कर पाते, राइट. सबके साथ सहजता से रहना, सबके साथ हम बहुत, आप मिलजुल के मत रहिए लेकिन अपनापन तो महसूस कर सकते हैं ना. हम लोग मैनकाइंड, मानव जाति का जन्म हमें मिला हुआ, राइट. तो ये एलिमिनेशन ऑफ ईगो सिर्फ इजीनेस से आता है, कनेक्शन से आता है और बिलोंगिंगनेस से आता है. जितना बिलोंगिंगनेस बढ़ेगा ईगो कम होगा, और ईगो जैसे कम होगा, ब्रेथ, with the help of breath we become more and more powerful, not only for ourselves but for the society also we will be useful. Some keys to stress free life: smile, breathe and go slowly, right. अभी जो ट्रू नेचर है हमारा, we are all peace loving. हम किसी को अनहैप्पीनेस चाहते हैं क्या? जो जहाँ पीस नहीं है वहां जाना चाहते हैं क्या? नहीं, राइट. हम सभी लोग पीस लविंग है, सभी को शांति चाहिए, किसी को अशांति नहीं चाहिए, सभी को सुख चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, लविंग नेचर चाहिए. हाँ, अभी ये जो है आर्ट ऑफ लिविंग स्ट्रेस फ्री लाइफ, बट इट इज द स्ट्रेस विच इज कीपिंग ऑल ऑफ अस डिटैच फ्रॉम आवर ट्रू नेचर. हमारा ट्रू नेचर क्या कहता है? स्ट्रेस फ्री लाइफ हमें जीना चाहिए, हमको बहुत खुशी होनी चाहिए, हम खुशी में रहना चाहिए, हैप्पी हार्मोन्स हमेशा बिल्कुल मेंटेन रहने चाहिए. हम सब कुछ जो चाहे वो अच्छे से हमको गो थ्रू कर पाएंगे.
सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते बनना चाहिए, हमें स्ट्रांग रहते बनना चाहिए, ये सब पॉसिबल है. दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग, राइट? एंड दिस इज आवर राइट टू लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, बट it can be possible only and only when we can live our life stress free. तो प्रॉपर रिदमिक ब्रीदिंग, सुदर्शन क्रिया जो हमने एक एंटीडोट इस पे है वो बताया, तो ये ओनली एंड ओनली ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ओनली दिस इज द ओनली टेक्निक विच कैन हेल्प यू टू गो थ्रू योर इमोशंस. हमारे इमोशंस के परे जाने के लिए, इमोशंस को हैंडल करने के लिए, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, इमोशंस को एंड फीलिंग्स को मेंटेन, प्रॉपर स्टेट ऑफ काम स्टेट ऑफ माइंड मेंटेन करने के लिए सुदर्शन क्रिया इज द ओनली ऑप्शन which can helpful to us. And further researches that has been carried out on this Sudarshan Kriya are that the cortisol, epinephrine or adrenaline in blood level decreases abundantly. Cholesterol level, HDL, also decreases. These are the studies carried out by Nimhans. Prolactin, oxytocin, serotonin in blood increases. It also works on insomnia, depression, anxiety, hypertension, heart diseases, respiratory ailments, diabetes, nervous system and kidney problems. These are the studies revealed by All India Institute of Medical Sciences. All these are available on Google. You can take out the screenshot of this slide and you can just go through it and you can cross check it. Now in 2010, this technique has got a very a very special identification as it is found out as a remedial solution for 158 different type of psychosomatic diseases, and it has been used as an alternative medicine, and this has been revealed by the World Health Organization that 158 psychosomatic diseases can be overcome through the proper daily practicing of Sudarshan Kriya. And beyond that, natural rhythm to the breath is imparted with the practicing this Sudarshan Kriya. Only this is the only tool which works on emotional management in the world. This is the worldwide accepted breathing technique. This is a normal with the breathing technique which has been widely accepted through almost more than 182 countries today. Then concentration, creativity, confidence, commitment, courage increases extremely in a person. These are the studies, psychological studies are carried out in Nimhans. Then mind automatically through the breathing practices, proper breathing practices, mind get trained with the positive mindset and the immunity gets set up at its proper level. These are all studies carried out in the very well-known research institutes in India, which are very reputed internationally too. राइट, ये अभी बता दिया हुआ है कि इसको प्रॉपर ब्रीदिंग कैसे करना है. एक कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है. यदि नई सुदर्शन क्रिया आप चाहते हो तो कोई भी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज चूज करिए. पॉसिबली उसको आप कंफर्टेबल क्लोथिंग वेयर करिए, ब्रीथली डीपली ब्रेथ करिए. कोई भी एक टाइम चूज कर लीजिए, वो टाइम में ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करिए. जितना नेचुरल हो सकता है उतना नेचुरल ब्रीदिंग करिए. डोंट फोर्स इट एट ऑल, राइट. देन प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू प्रैक्टिस. ये ही माइंडसेट हमारा नहीं होता है, ये माइंडसेट पे ही हमको काम करना है. You don't have to change your lifestyle, but you have to add something in your lifestyle, and that is this Sudarshan Kriya. You have to add it in और add on करिए उसको, इसको लाइफस्टाइल में एड ऑन करिए. आपको लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए कोई नहीं कहेगा. यदि आप वॉकिंग कर रहे हैं करिए, यदि आप जिमिंग कर रहे हैं करिए,
यदि आप गार्डनिंग करिए, सिंगिंग करिए, ये लाइफस्टाइल में यू हैव टू ऐड द ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस. So while we naturally breathe without having to think about it, you must be present and focused to practice breathing techniques. Regular consistent breathing practice is important to strengthen your respiratory muscles. The more you practice, the more naturally these breathing techniques will come to you, particularly when you are in a stressful situation, be it a golf putt, attempting to score the winning point or running that final line, whatever it may be. For your practice sessions, follow these guidelines. Begin by clearing both nostrils completely. Blow your nose if necessary. Choose a quiet and comfortable environment as free from distractions as far as possible. Breathe only through your nostrils unless otherwise directed. Breathe smoothly in and out. Try to keep the rhythm of your breathing regular and natural. If your mind wanders, or you lose your count, gently bring your mind back to the count. This may take a little practice, little more days, but if done regularly, it will become second nature. The goal is to find the perfect pace for your body and for your breath. This will help you to sleep into that meditative performance state, often referred to as the comfort zone. As this method becomes more second nature to you, start practicing it in real life environments. This will be your real test of success. Yahi success hai. Right? Then the Sudarshan Kriya, as again and again telling you that this is the unique tool to stress release. Unique tool, यही एक tool है जो हमारा stress release करता है immediately. Sudarshan Kriya is a powerful breathing technique which works on connecting body and mind through breath. It releases all types of stress, physical, mental, and emotional. Research has proven its healthy effects on psychological disorders such as depression, schizophrenia, and manic episodes. Courage, confidence, connectedness, care, compassion, commitment, cosmology are very important aspects of life which can be achieved by regular practicing Sudarshan Kriya, as Sudarshan Kriya is a doorstep to meditative state of mind and meditation itself, right? जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं तो ये कामनेस, ये काम स्टेट ऑफ माइंड अपने आप मेंटेन होते चलता है और ये काम स्टेट ऑफ माइंड हमें ऑटोमेटिकली मेडिटेटिव स्टेट के ओर ले जाता है. जब मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड होता है तो बाकी सारी जो अनसीन हमारी दुनिया है, that is that which comprises by mind, memory, intellect, self, emotions, ये जो हमारी अंदर की दुनिया होती है ये भी बहुत, इसको भी बहुत स्ट्रांग होती है, स्ट्रेंथफुल होती है, right? And the Sudarshan Kriya brings the harmony in all 7 levels of your existence. जो हमारे 7 levels है existence की, what are these? Body, breath, mind. बोलो, anybody knows? हमने अभी यहाँ जो डिस्कस की हुई है, हाँ, शरीर, श्वास, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और आत्मा. I will repeat it in Hindi and Marathi. शरीर, श्वास, चित्त, बुद्धि, अहंकार and आत्मा. शरीर, श्वास, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, आत्मा. शरीर, श्वास, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, आत्मा. तो हमारा WHO का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेल्दी पर्सन का जो डेफिनेशन है वो कहता है ये 7 स्तरों में हार्मोनी होना बहुत जरूरी है. तो recent studies has revealed that Sudarshan Kriya brings a best harmony in all these 7 levels of existence too. Hence, I would like to emphasize all of you to practice this unique tool and give a space to practice this tool in your everyday life. As I have told you that meditation is just to know you that you are stress free, you are hollow, you are empty, you are in the present moment,
you are happy. All the betterment of life is brought to you by the meditative state of mind and the practices of meditation. As you go on practicing Sudarshan Kriya daily, the meditative state of mind will be maintained as it is, and you can go easily towards the meditative state of mind as and when required, wherever you are needed, whenever you are needed, right? So you have to do it today to enjoy your relaxed tomorrow. तो सबसे बड़ा हमारा शत्रु क्या होता है? करेंगे, आज करेंगे, देखेंगे, होगा, कल से स्टार्ट करेंगे, टुमारो। यदि हम टुमारो रिलैक्स चाहते हैं तो हमें आज को एंजॉय करना सीखना होगा। ये प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना सीखना होगा। प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना हमें बहुत सीखना होगा। दैट इज द पार्ट टू learn, right? And that is possible through proper breathing practices. So do it today, don't keep it for tomorrow. When you do it today, you can enjoy your relaxed tomorrow, right? Tomorrow is near today, but tomorrow is near, but today is here, right? So get it today, get it done today only, get it learn today only, right? There are some more tips to release stress, right? Exercise, regular exercise, breathing exercises, meditative state of mind, meditation को के लिए जाना है तो सुदर्शन क्रिया सीख लो, ऐसे ही मेडिटेशन में चले जाएंगे। थोड़ा सा एक नैप ले लो यदि आपको अच्छा लगता है। तो ये बाकी की सारे जो कुछ भी टूल्स है, ये आपको हमको बहुत कम समय के लिए स्ट्रेस रिलीज देते हैं। यदि आपको स्ट्रेस रिलीज का टेक्निक सीख लेना है तो यू हैव टू गो थ्रू द सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिसेस डेली। गॉट इट? देन एवरी डे ब्रिंग्स अ चॉइस टू प्रैक्टिस स्ट्रेस और टू प्रैक्टिस पीस। हर एक का लाइफ अपना अपना है। हर एक व्यक्ति अपने तरीके से अपना जिंदगी जीना चाहता है, और ये हर एक का चॉइस होगा कि आपको रोज हर डेली स्ट्रेस को प्रैक्टिस करना है या पीस को प्रैक्टिस करना है, राइट? इफ यू प्रैक्टिस पीस and if you don't able to do anything when everything else fails, just smile. When the life gives you 100 reasons to cry, show life that you have 1,000 reasons to smile, right? Just go on smiling. The one who smiles rather than rages is always stronger, dear friends. So thank you very much once again for your patient hearing. Thank you once again to all the coordinators of this inductive program. Thank you once again to the director of the UGC HRDC, Professor Dr. S.S. Patil sir. Thank you once again, Professor Dr. Rafe sir, for giving me such a wonderful opportunity to share some views on the stress-free life today with all of you. Thank you one and all. Now the session is open for question and answers. Yes, anybody has any questions? मैडम, सुदर्शन क्रिया करने के लिए सुटेबल टाइम वो कौन सा होता है? 24 आवर्स में कभी भी करिए, सिर्फ पेट खाली होना चाहिए। और ये कैसा हो, बहुत ज्यादा रिलैक्स कर देता है ना, तो एनर्जी बढ़ जाती है। तो इट वुड बी मोर बेटर कि आप शाम के 6 बजे से पहले कर ले, ताकि आपकी नींद में भी कुछ डिस्टर्बेंसेस ना आए, है ना? Anybody else? And you can take my number too, as I would like to convey you that I am also a teacher too, which teaches the Sudarshan Kriya. I to take the workshops too, and wherever and wherever you are in whatever city you belong to,
You just contact me. I can get you the direction to teach, get the lessons of Sudarshan Kriya from your city, right? So you can take my number also. My number is 94237. Ma'am, thank you for your lecture. But your lecture is very informative and you release our stress. Oh, that is what I am made up for. Ma'am, I have a question. Yes. Ma'am, is it necessary that we have to do Sudarshan Kriya or any breath work will do the same effect? Yes. See what for what we should give the priority to our life, that decides the quality of your life, right? जब कभी हम काफी रिसर्चेस जिस बात पे हुए हैं उसको छोड़ के हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहे हैं तो उसका फायदा हमें होगा नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन वो उसी तरीके का होगा जितना अच्छे तरीके से होना चाहिए, उतना ना होके उसका जो प्रोपोर्शन है वो जरूर कुछ लेस होगा, right? It is not necessary to do that only, but life is yours. You have to take the decision, proper decision, and proper priorities should be given in life. What we are doing in our daily practices, right? Yes, ma'am. And because everybody's body is different, right? So Of course, yes. Of based course. on Yeah, of course, yes. That is why what I have suggested you all, that you take out the sorry, you take just a minute. You take out the screenshot of that slide where I have described the Sudarshan Kriya, right? That time only I have told you that you take out the screenshot and go through the Google surfing, right? उसको होमवर्क करके देख लेना एक बार ये क्या है. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. Anything else? हेलो. हेलो. हाँ मैम, नमस्ते. बोलो. बहुत ही अच्छा सेशन था आज का. एक सवाल मेरे मन में आया था. अपने डिप्रेशन में जो भी बच्चे आज जाते हैं स्ट्रेस के कारण या फिर बहुत सारी दिक्कतें आती है, कॉलेज के बच्चे भी स्ट्रेस में डिप्रेशन में जाते हैं मैम. Yes. तो क्या इसके लिए आज की जो कुटुंब व्यवस्था है ये मायने रखती है क्या उसके लिए? बहुत ज्यादा. ये सब सोशल रीजंस में हमने देखे ना, जो साइको सोशल रीजंस जो देखे ना हमने स्ट्रेस के, हाँ. उसी में आता है सर. तो वो तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन हमको यदि देखो अडेप्टिव रहना है, हमको अभी ये तो चेंजेस, हम इसको फिर से जॉइंट फैमिली में तो नहीं जा सकते हैं ना. आज के जो अडेप्टेशन है इसको हमको लेके ही हमारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहना चाहिए. फिटेस्ट जो है उसका ही सर्वाइवल होगा. तो हम ये बच्चों को इसको डिप्रेशन में बाहर निकालने के लिए कुछ हमको करना होगा ना. और देखो यस, और देखो जब कुछ करने का मन नहीं होता ना, वहां डिप्रेशन बैठता है आके. बराबर है. जो व्यक्ति हमेशा काम में लगा रहता है, हमारे जैसे देखो हम कुछ ना कुछ काम में लगे रहते, कुछ ना कुछ करते रहते, प्रोडक्टिव करते रहते, तो कहाँ आया डिप्रेशन? जहां एम्प्टीनेस होता है वहां डिप्रेशन होता है. यस मैम, बराबर है. थैंक यू मैम. थैंक यू. Okay, so shall we conclude? Yes, ma'am. Yes. But with the vote of thanks. Thank you, ma'am. Myself, Dr. Swati Vishal Pawar from Tier College of Education, Pune. First of all, I want to thanks to organizer for this given me this opportunity. हिंदी में कबीरदास ने एक
दोहे में कहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी. इस तरह likewise today's lecture is enlightening us. So Dr. Suparna ma'am, mainly focus points are the what is the stress, types, causes, impact of stress, then current status, then suggested key to healthy life, importance of breathing for distress, benefits of healthy person, 7 levels of existence, Sudarshan Kriyas, meditation, all of covered by ma'am. And from bottom of my heart, I sincerely thanks to Dr. Suparna ma'am. Thank you. I would like to thanks to Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, UGC, HRDC, coordinator of this faculty induction program, support team, and all of my participant friends. Thanks to one and all. Thank you, ma'am. Thank you so much. Snail ma'am, shall we end? Yes, ma'am. Please conclude the session. Already I have concluded, ma'am. Okay. I mean, we can left the meeting now. Yes, yes. फीडबैक फॉर्म का हुआ है क्या मैम? Sir, I need to ask. Okay. Yeah. Okay.